घटनार तदंत आरंभ होइथिया बेले रिपोर्ट आसिबा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण हेबो बोली जणा पड़िछि। चर्चा हेउछि जे संपृक्त कनेस्टेबल सरोज दास निशासक्त अवस्था थाना परिसर में एभली किछि कहिसंती। तांको पाखरु गोटे बंधुक मध्य जबत होइछि बोली कहा जाउछि। तेबे संपर्क रे किछि ठोस तथ्य मिलु नाही। जहाँ सूचना मिली गत सप्ताह तले कनेस्टेबल सरोज दास थाना परिसर में पूर्वतन विधायक अनुप साई को हत्या करिवे बोली कहिथिले। यापर गत गुरुवार ही कनेस्टेबल श्री दास को बदली करा जाइछि। 2016 मसीह झारसुगुड़ा होइतिबा चर्चित डबल मर्डर घटनार मृतक कल्पना दास थिले कनेस्टेबल श्री दास संपर्कीय भौणी। सेही समय छत्तीसगढ़ चक्रधर नगर पुलिस पक्षर जारी होइतिबा फोटो आधार में कनेस्टेबल दास ही सब चिन्हट करथिले। निकटरे अनुप साई जमीन ने आछंती, तेणु प्रतिशोध नेबाकू जाई कनेस्टेबल सरोज एपरि किछि कहितिबा चर्चा हेउछि। तेबे कनेस्टेबल दास प्रकृत में निशासक्त अवस्था एपरि कहिथिले ना या पछरे किछि षडयंत्र अछि, ताकू नै आरंभ होई जाइछि छानबीन। गोटे पटे मंत्री नवकिशोर दास को गुली करी हत्या करने घटना को लेकिन वर्तमान भी हईचई जारी रही। वर्तमान ये घटना भी सठिक तथ्य सामना को आसी ना। ता भितर झारसुगुड़ा आउ जड़े राजनेता को हत्या करने को योजना सन्देह सामना को आसने अधिक आलोचना करवा। झारसुगुड़ा प्रतिनिधि जितेन्द्र देवता आम फोन लाइन अच्छा। जितेन्द्र टी आपठू सविशेष तथ्य जानवा चाहिए। देखो जदि आम कह नवदास हत्याकांडर रहस्य उन्मोचन हेनी एबे पुलिस को विवाद रे थिबा बेले अन्य पुणी एबे गुटे चित्र सामना को आसुची कथा सामना को आसुची जे जो कोलाबिरा थाना रे कार्यरत कांस्टेबल सरोज दास जी की मद्यप जहाँ कहा जाउची जे चर्चा होतला बाहर अनेक समय से कौ जगह गुटे कहिसंती जे जो पूर्वतन जो ब्रजराज नगर जो एमएलए थे अनुप साय से कल्पना दास और बबली दास हत्याकांड से रायगढ़ जेल रे सजा काटुले किसी दिन हम से एबे आसी ब्रजराज नगर बेल रे आसी जहाँ कहा जाउची जे जो सरोज दास कांस्टेबल थिले से कोठी चर्चा करथिले जे अनुप साय को से हत्या करियो बोली जहाँ चर्चा होतला जहाँ की एई जो चर्चा हला से चर्चा हेबा परे आईआईसी जो कोलाबिरा थाना जो आईआईसी अच्छा नजर को आसीला कान को आसीला से समय से पुणी एसपी कान को पकड़ कान को पकड़ा पर गत गुरुवार दिन जो सरोज दास थे जो कार्यरत कांस्टेबल सरोज दास थे रिजर्व रे अटैच करा जाइछि। एबे आमे कहि परिबा जे गोटे घटना एपर्यंत स्पष्ट होई नाही। आउ गोटे घटना एबे पूरा झारसुगुड़ा जिल्ला रे चांचल्य सृष्टि करि सारलानी काहेकि ना जो भली भाबरे जदि आम कह प्रत्येक खबर कागज यही जिनस ही एबे सामना को आसूची जे जो कार्यरत जो सरोज दास अच्छा से कौटी ना कौटी मद्यपान करी कथाटा को कही जोटा कि आईआईसी कान को जाइए। आईआईसी परवर्ती समय झारसुगुड़ा एसपी नजर को आनी नजर को आनला गत गुरुवार दिन जो अच्छी रिजर्व पुलिस को ताको अटैच करा जाइछि। जितेन्द्र किंतु पूर्व आमे जड़े पुलिस अधिकारी को एथिरे संपृक्त थिबा कथा सामना को आस्तिला नवदास हत्या घटना रे वर्तमान पुणी जड़े पुलिस कर्मचारी पाखरु एमिति गोटे सूचना मिलिबा निहाती भाବରେ पुलिस विभाग एवं तार जो आत्मसंयमता ऊपर गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करूनी कि निश्चित भाव में कहीं ना जो भाव में नवदास को अभियुक्त गोपाल जी की एएसआई थिले से दिन द्वीपर गुली करी हत्या करथिले से घटना एपर्यंत काहारी मन भितर लिभि नाही। पुणी थरे गोटे कथा सामना को आसुची जे जो पूर्वतन ब्रजराज नगर जो पूर्वतन एमएलए थिले अनुप साय तांकु कोठी कांस्टेबल सरोज दास हत्या करिया बेली कोनोसी ना कोनोसी टारे कहिथिले जोटा पई कि आईसी जो कोलाबिरा आईसी को कान को आसिला। एवं हम जदि कहबा जो सरोज दास जी अछंती कांस्टेबल से कोठी जो जार हत्या होता जो कल्पना दास कहवा संपर्कीय भाई बोली तो ये चर्चा होची जहाँ पेपर रे भी देखा मिलूँ अन्य जगह चर्चा भी जिनसा होची कौटी ना कौटी यही घटना हुए तो सरोज दास कौन कही थाई पारती जो कि आईसी कान को गला आईसी परवर्ती समय एसपी नजर को आनी से कोलाबिरा थाना पुणी थर रिजर्व पुलिस रे अटैच करा जाइछि। तो कौन ना कौन यही घटना को लेकर आम एसपी को जोगाजोग करूँ। एसपी कहवा हिसाब से एपर्यंत कौन आम हाथ में ऑडियो वीडियो
हस्तगत हेई नाही सेति पई हमर अच्छा ए नहीं कि कांस्टेबल सरोज दास निजे कोन कहउछंती देखो जो कांस्टेबल सरोज दास अछंती तांको सहित मध्ये हम जोगाजोग करिया पई चेष्टा करूछु किंतु एपर्यंत कोनसी आम तमाने ऑब्जेक्ट रेकॉर्ड कथा कोंतु किंबा कैमरा सम्मुखर कथा कोंतु से कोनसी या ऊपर प्रतिक्रिया देबेनी बोली रोकठोक मना कर दैछंती तो आमे एठी जेहेतु गोटे चर्चा हेउची एवं खबर कागज रे मध्ये ए खबर प्रकाश पाइची एवं जदि आमे कहबा आईआईसी को सहित मध्ये हम जोगाजोग करथिलु आईआईसी मध्ये कहबा हिसाब रे जे एई घटनाटी किछि दिन आगुरु कांस्टेबल जो सरोज दास अछंती से एई घटना को काहारी सम्मुखरे कहिथिले जोति पई कि आम नजर को आसिला परवर्ती समय आम एसपी को नजर को आनिथिलु एई खबरटी जानला परे ताको रिजर्व को अटैच कराइछि किंतु ए पर्यंत एहार इंक्वारी चलीछि इंक्वारी रे जहा स्पष्ट हबो परवर्ती समय गणमाध्यम को जणाइबे बोली जहा एसपी कहउतिले किंतु जितेंद्र जदि दुईटी घटनाक्रम रे जदि व्यक्तिगत शत्रुता कथा सामना को आसिला काना प्रथम घटना रे गोपाल दास को केस रे व्यक्तिगत शत्रुता कथा को आ जाईछि जदि ए केस रे व्यक्तिगत शत्रुता केवल गोटे निर्दिष्ट कारण होई पारे बोली आशंका करा जाउछि सांघातिक निश्चित भाव रे काहीना जोभଳି भाबरे गोपाल दास दिन दीपरे मंत्री पूर्वतन मंत्री जे स्वास्थ्य मंत्री थिले नवदास को हत्या करथिले एवं जहाँ विशेष सूत्रु आम पाखु जहाँ खबर हस्तगत होता खबर आसाला जे व्यक्तिगत कारण गोपाल दास जी अच्छा से पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री को गोली कर हत्या करते अंपटे जब कहवा सरोज दास जी कांस्टेबल कोलाबिरा थाना कार्यरत थे से कल्पना दास संपर्क भाई एवं से कौटी ना कौटी से कहते से हुए तो मद्यपान करके अन्य कौन परिस्थिति कहते किंतु कथाटा जेहेतु बाहर को आसी थाना अधिकारी नजर को आसी थाना अधिकारी कान को बाजी थाना अधिकारी गुरुत्व भाव नहीं से एसपी को नजर को आनी एसपी संगे संगे रिजर्व रे अटैच करते तो आम कहीपर जदि एठी व्यक्तिगत शत्रुता भली किसी जना पड़ी जेहेतु संपर्क भाई एवं से जो भाई भाव कहते वर्तमान पुलिस से नहीं कि छानबीन करुछि एवं जेहेतु रिजर्व रे रखा जाइछि अधिक तदंत परे स्पष्ट होई परिबो घटना बोली पुलिस तरफ रु कहा जाउछि। धन्यवाद जितेंद्र सविशेष आलोचना पई। दीपक आमर प्रतिनिधि हम सहित फोन लाइन में मध्ये अछंती। दीपक दुईटी घटना वर्तमान सामना को आसी जाउछि गोटिए घटना नै कि पर्दा हटी नाही किबा लोक माने सेबी ए नै कि संदेहान अछंती अन्य पखरे पूर्ण जने पुलिस कर्मचारी को विरोध रे जो अभियोग आसी एवं से नै कि इन्वेस्टिगेशन चलथिबा कथा कहा जाउछि केमि देखुछंती घटना को दीपक ये घटना को कौन केमी देखुछंती ए जो कथा सामना को आसुची सरोज दास कर एमिति गोटे मनसा कथा सामना को आसुची इन्वेस्टिगेशन कौन केमती निहाती भाबरे आमे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित आलोचना करछो तांकर कहला कथा जेतेबेले घटना सामना को आसिला ता परवर्ती मुहूर्त रे संपुक्त पुलिस कर्मचारी को किबा कनेस्टेबल सरोज दास को जिला पुलिस रो मुख्यालय को बदल कराइछि परवर्ती मुहूर्त में पुलिस तदंत आरंभ कर प्रकृत में सफल कौन थिला एवं संपुक्त कनेस्टेबल सरोज से कहा आगे कहते जदिव से मद्यप अवस्था एभली कथा चर्चा होती पूरा घटना कौटी ना कौटी पुलिस विभाग को नहीं अनेक किसी प्रश्न सामना को आसुची विशेषकर घटना पछर सत कौन थिला प्रकृत में से मद पी एमती कहते ना ना मत न पीके कहते कौटी ना कौटी चर्चा होती तेणु वरिष्ठ अधिकारी माने पुलिस अधिकारी माने घटना को गुरुतर सह नहीं परवर्ती मुहूर्त में तदंत आरंभ कर आईआईसी घटना तदंत आरंभ कर जो मान आगे से कथा पकाउले पुलिस तदंत कर प्रकृत में घटना पछर कारण कौन था एमती किसी कारण थाए कौटी ना कौटी पुलिस तदंत कर अन्य पक्ष संपुक्त कनेस्टेबल पाखे बंधुक रही कि ना कहीं जो कनेस्टेबल माने बंधुक ट्रेन नियंती से बंधुक जोगाई दि जाए तो पाखे बंधुक अच्छी कि ना कौट ना कौटी प्रश्न उठुची तो निजे कहवा एसपी घटना को नहीं गुरुत्व सह आईआईसी घटना को तदंत व्यक्तिगत शत्रुता जदि पछरे थिबो ताहाले तो बहुत बड़ सांघातिक इश्यू ही पारे काना पूर्वरु भी गोटे घटना होई सारिछि व्यक्तिगत शत्रुता कारण
देखिए गोपाल जो भाव में मंत्री नवदास को गुली कर हत्या कले ये घटना को नहीं कौटी ना कौटी पुलिस बैकफुट रही पुणी एक घटना सामना को आसी पूर्वतन विधायक अनुप साय को हत्या करने योजना कर जन कनेस्टेबल तेणु ये घटना सामना को आसला पुणी थे पुलिस को नहीं प्रश्न उठुची कहीं पुलिस जब भाव में ढंग से मद्यप अवस्था कहतु कारण गोटे बनुची निहाती भाव में प्रश्न उठा स्वाभाविक विभाग प्रति किंतु अनुमान कि विभाग तदंतर हुए तो ठोस निर्यास मिल पारे सामना को आसी पारे कि क्यों परिस्थिति रे पूरा घटना घटी। धन्यवाद दीपक सविशेष आलोचना। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. पुणी गोपाल मानसिक स्थिति जांच हेब चौद्वार जेल रे जांच पई कोर्ट दैछंती परामर्श। निमांस बेंगालुरु रे गोपाल मानसिक स्थिति जांच पई झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करिथिला क्राइम ब्रांच। ए आवेदन को खारज कर दैछंती झारसुगुड़ा कोर्ट। गोपाल को चौद्वार जेल मध्य विशेषज्ञ डाक्तर पैनल जरिया रे मानसिक परीक्षा कराइबा को कोर्ट परामर्श दैछंती। एमिति अवस्था रे एबे भी द्वंद्व रे क्राइम ब्रांच। नवदास हत्यार कारण एबे भी अस्पष्ट रहिछि। पूर्व गुजरात रे मानसिक स्थिति जांच होइतिला पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कर दैथिला। आवश्यक हेले क्राइम ब्रांच तल कोर्टों राय को ऊपर कोर्ट रे चैलेंज करियो बोली सूचना दैछि। अर्थात यह स्पष्ट करुछि नवदास हत्या मामला रे क्राइम ब्रांच रो तदंत एजाएं शेष होइनी। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य सदस्यों आंदोलन प्राय 30,000 संख्यार महिला एकजुट होई भुवनेश्वर रणहुंकार देइथिले। पारिश्रमिक वृद्धि सहित 10 दफा दाबी नहीं गर्जिथिले मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य। विजु श्रमिक संघ अधीन आसुवा ऑल ओडिशा जीपीएलएफ मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य पक्षरु आंदोलन कर जाइतिला। जीपीएलएफ रो समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को स्थायी नियुक्ति पारिश्रमिक और गस्त खर्च वृद्धि ईएसआई सुविधा सहित चिकित्सा भित्तिक छुट्टी प्रदान करने समेत सामुख्य पक्षरु 10 दफा दाबी रखा जाइछि। याको समर्थन करी आंदोलन में सामिल होइतिले विजु श्रमिक सामुख्य महासचिव झारसुगुड़ा आउ एक पॉलिटिकल मर्डर प्लान अभियोग। पूर्वतन ब्रजराजनगर विधायक अनुप साई को हत्या करने को कांस्टेबल सरोज दास करथिले षड्यंत्र। योजना सामना को आसिबा परे कोलाबिरा थानारू कांस्टेबल को बदली कल्पना दास को संपर्कीय भाई सरोज दास। आसिला मंत्री नवदास को गुली माडर फटो अति निकटरू गोपाल फायरिंग करुछंती। हाथ देखा जाउछि किंतु देखा जाउनी बंदूक। हाथ पोजिशन रु जना पडुछि गोपाल ही बंदूक चलाउछंती। आज विधानसभा बजेट अधिवेशन राज्यपाल अभिभाषण आरंभ हो अधिवेशन। सबु दल पाखरे माଳ माଳ प्रसंग। विरोधी आईन श्रृंखला तो शासक दल चाउल। सरकार को घेरिबा को बीजेपी और कांग्रेस प्रस्तुत। भुवनेश्वर रही दिल्ली को टार्गेट करने को बीजेडी रणनीति। पुणी भूमिकंप पुणी थरिला तुर्की। रिक्टर स्केल रे तीव्रता 6.5 और 5.8। तुर्कीर हाथिया प्रदेश अधिक क्षतिग्रस्त। 3 जनकर मृत्यु सह 200 रु अधिक आहत। भुशुड़ी पड़ा घर। सीरिया रे भी प्रभाव। गैंगस्टर को विदेश आसुची टेरर फंडिंग। किए खोजा देशर 6 रु अधिक राज्य में 70 स्थान में एककालीन एनआईए टीम चढ़ाऊ। पंजाब हरियाणा दिल्ली गुजरात मध्य प्रदेश आउ किछि राज्य में रेड जारी। गिरफ गैंगस्टर को जेरारू एनआईए को मिलता सूचना। मुंबई रे ख्यातनामा सिंगर सोनू निगम को ऊपर आक्रमण अभियोग। चेंबूर रे संगीत कार्यक्रम में सोनू और तांको टीम सह दुर्व्यवहार अभियोग नहीं एतला। सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल। आयोजकों जुक्ति सेल्फी नेबा को होइतिला ठेलिया पेला।
नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। गोटे खबर राज्य में चर्चित एवं ताकू लिंक करी आउ एक खबर सामना को आसी झारसुगुड़ारू आउ जने राजनेता को हत्या करने को योजना संदेह। ब्रजराजनगर में मंत्री नवकिशोर दास को गुली करी हत्या करा जिबा घटना को नहीं हईचई थमी नथिबा बेले पुणी एक बड़ षड्यंत्र होइतिबा नै सूचना होइछि। जड़े जनप्रतिनिधि को हत्या पाई योजना करिथिबा कथा सामना को आसीछि एवं एहाकु नै एबे चर्चा। व्यक्तिगत शत्रुतार प्रतिशोध नेबाकु जाई ब्रजराजनगर पूर्वतन विधायक अनुप साई को हत्या पाई योजना करिसथि जड़े कॉन्स्टेबल आ कॉन्स्टेबल जनक हेउछथि कोलाबिरा थाना रे कार्यरत सरोज दास। ए घटना पर कोलाबिरा थाना रे कॉन्स्टेबल सरोज दास को बदली करा जायतिला एवं विभागीय तदंत भी आरंभ होइछि तांको विरोध रे। रिपोर्ट आसिबा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एवं चर्चा होछि संपृक्त कॉन्स्टेबल सरोज दास निशासक्त अवस्था थाना परिसर रे एभली किछि कहि दैछंती एवं तांको पाखरु भी एक बंदूक जब्त होइछि। ए संपर्क रे कोनोसी ठोस तथ्य तो जदियो मिली नाही किंतु जहा सूचना मिलुछि गत सप्ताह तले सरोज दास थाना परिसर रे पूर्वतन विधायक अनुप साई को हत्या करिवे बोली कहिथिले। तेबे गत गुरुवार ही कॉन्स्टेबल श्री दास को बदली करा जायछि। 2016 मसिया झारसुगुड़ा रे चर्चित डबल मर्डर घटनार मृत कल्पना दास थिले कॉन्स्टेबल श्री दास को संपर्कीय भौणी आ सही समय छत्तीसगढ़ चक्रधर नगर पुलिस पक्षरु जारी करा जायतिबा फोटो आधार कॉन्स्टेबल श्री दास ही सब चिन्हट करथिले एवं निकट रे अनुप साई जामिन रे आसिछथि तेनु प्रतिशोध नेबाकु जाय कॉन्स्टेबल सरोज एभली किछि करिथिबा चर्चा हेउछि। तेबे कॉन्स्टेबल श्री दास प्रकृत रे निशासक्त अवस्था रे एभली किछि कहिथिले ना एहा पछरे किछि षड्यंत्र रहिछि ताकु नै आरंभ होइछि छानबीन। तेज घटनाक्रम को नजर पकेबा 2016 मसीह झारसुगुड़ा रे कल्पना दास और झील प्रभाती दास को अति निर्मम भाव हत्या करा जायतिला। पर उभय शव को ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत एक कोयला बोझी मालगाड़ी रे फिंगी दिया जायतिला। चक्रधर नगर पुलिस उभय शव जबत करथिले भी उभय मृतकर मृतदेह चिन्हट होई पारि नथिला एवं एथिपाई छत्तीसगढ़ पुलिस ओडिशा झारखंड पश्चिम बंग महाराष्ट्र को फोटो पठाइथिला एवं एपीआर कांस्टेबल सरोज दास सेतेबेले ब्रजराजनगर थाना रे कार्यरत थिले एवं फोटो देखि से सेतेबेले चिन्हट करथिले। फोटोटी तांको संपर्कीय भौणीकर बोली एवं एही व्यक्तिगत शत्रुतारू हुए तो एभली से षड्यंत्र करिथाई पारंती ए कथा को नै मध्य वर्तमान तदंत हेउछि। नवेश महाती अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा। नवेश गोटे घटना बर्तमान तार अंत है आउ गोटे घटना सामना को आसुची एभली एक घटना जहाँ होते पुणी राज्य राजनीति गोटे चर्चा पलटि जो भली भाव में अनुप साई को हत्या करने षड्यंत्र कथा सामना को आसुची। देखो जदि आम स्वाति पूरा घटना को देखा निहाती समस्त चिंता बढ़ी एवं 2016 मसीहार घटना जितेबाला कल्पना एवं तांको झील प्रभाती को हत्या करा जायतिला एवं हत्या करा जाय ताको छत्तीसगढ़ नियाइतिला एवं सेठारु ताकर मृतदेह जबत हला एवं सरोज सेतेबेले चिन्हट करथिले जे ताकर भौणी संपर्क भौणी एवं झियारी को चिन्हट करथिले एवं सेही घटना रे छत्तीसगढ़ चक्रधर नगर पुलिस मामला रुजु करथिला तदंत करथिला। 2019 मसीह रे अनुप साई को गिरफ्त करा जायतिला एवं अल्प किछि दिन तळे अनुप साई जामिन रे खलास होइचंती एवं सेही जदि कहबा 2019 रे गिरफ्तारी परे एबे पाखापाखि 3 वर्ष 3.5 वर्ष पर पुणी थे घटना सामना को आसी जेहेतु सरोज दास संपर्क भौणी होती कल्पना एवं झियारी मृत्यु घटी जहाँ कुहा जाउची एपर्यंत पुलिस अधिकारी एने की मुह खोलना किंतु जहाँ कुहा जाउची जे सरोज दास गत सप्ताह रे कोलाबिरा थाना परिसर रे ड्यूटी करथुवा समय रे निशासक्त थिबा अवस्था रे पाखरे बंधुक थाई से अनुप साई पूर्वतन विधायकों को हत्या करिया पई की धमक देइतला एवं जेतेबेले ए कथा पाखरे थिबा किछि पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मी सुनिले सेमानकर होश उड़ी जाइतला एवं सेमान भी जानितिले जे जो मृतक रहिचंती कल्पना एवं प्रभाती तांको संपर्क हेउचंती सरोज एवं सरोजकर चिन्हट पर ही बॉडी आइडेंटिफाई होइतला। तेणु सरोज को राग हुए तो अनुप साई ऊपर थाई पारे तुरंत जहाँ सूचना अच्छी से एने उपरिस्थ अधिकारी अर्थात पुलिस एसपी को जनइथिले एवं जेतेबेले एसपी झारसुगुड़ा स्मिथ परमार पाखे खबर पहुंचला तुरंत सरोज दास को बदली करा जायछि पुलिस मुख्यालय को ताको जिला मुख्यालय को ताको बदली करा जायछि एवं एबे तदंत जारी रहिछि। तदंत कहबा जे विभिन्न एंगल रु तदंत करा जाउछि। सरोजर बयान मध्य आज
रेकर्ड होइचे ना नहीं ताहा स्पष्ट होइजिबो कारण घटना जेतु गत सप्ताह तबे सरोजर बयान मध्य रेकर्ड करा जाइतिबो एवं जो माने सुनिथिले कोलाबिरा थाना परिसर रे जो पुलिस कर्मी जो पुलिस अधिकारी सरोजर ए कथा को सुनिथिले बा सरोजर धमक को सुनिथिले सेमानकर बयान मध्य रेकर्ड होई सारिबणी बा निहाती होइतिबो एबे अपेक्षा रही तदंत रिपोर्ट कौन कहूँ एवं रिपोर्ट पर कौन कार्यानुष्ठान पुलिस ग्रहण करुच्ची दुईटी कथा आसो आइदर रिपोर्ट रे स्पष्ट हो जे हाँ सरोज दास ये किसी कथा कहते कि सरोज दास पाखु शुणी कथार तालमेल न जो आई विटनेस थे से बयान रेकर्ड हुए तो तालमेल मिल न किंतु पारिपार्श्विक स्थिति भिन्न कथा कहूँ पारिपार्श्विक स्थिति यह कहूँ जेहेतु बदली होती प्राथमिक अनुसंधान को भित्ति करी এই বদলি করা যাইছি এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান নিহাতি ভাবে সরোজ দাস যে কলপ্রিট সরোজ দাস এই ভଳି ধমক ଦେଇଛନ୍ତି নিশাসক্ত অবস্থায় থান্তু কিংবা ন থান্তু কিন্তু পাখরে বন্দুক রখিଥିବା অবস্থায় সে কথা କହିଛନ୍ତି এবং যেহেতু से ताको संपर्क भौणी और संपर्क जियारी डेड बॉडी आइडेंटिफाई करते एवं सेबे ठारू हुए तो म्रियमाण अवस्था थाई पारती तेणु निहाती भावे तांकर कथारे सत्यता थाई पारे हुए तो से योजना करथाई पारती तेणु वर्तमान तो प्राथमिक अनुसंधान को आरंभ करी तांको विरुद्ध रे छोट कार्यानुष्ठान होइछि तांको बदली करा जाइछि किंतु जदि प्रमाणित हेउछि सरोज दास को एई तांको विरुद्ध अभियोग प्रमाणित हेउछि तबे तांको निलंबन मध्य करा जाय पारे एहा बाद तांको विरुद्ध आउ किछि एक्शन देने जाय पारे किंतु ए पर्यंत ताहा ग्रहण करा जाय नाही जदि पुलिस रो विधि व्यवस्था कथा कहबा जेतेबेल जने कांस्टेबल को ट्रांसफर कर जाय थाए ए नै कि पुलिस मुख्यालय पाखरे लिखित भाव कौन सूचना पहुंची न था आम मुख्यालय अच्छु आम जो सोर्सेस अच्छा आम पचारूँ से कह मुताबक विधि व्यवस्था जहाँ रही पुलिस मुख्यालय जेहेतु एसपी सस्पेंड करुँदी कहवा ट्रांसफर कर कांस्टेबल को तेबे से अति बेस जड़े कि रेंज आईजी को जड़े तेणु ये खबर रेंज आईजी पाखे ऑफिशियली थी किंतु जहाँ सोर्सेस आम कहते स्वाति नॉन ऑफिशियल भी पुलिस मुख्यालय को नहीं खबर दि जाइए किंतु वर्तमान जेहेतु तदंत चली पुलिस मुख्यालय घटना कौन प्रकार हस्तक्षेप वर्तमान करनी किंतु किंबा पुलिस मुख्यालय पक्षर कौन प्रकार बयान वर्तमान सुधा जारी कर जाइनी एसपी ऑफिशियली कौन बयान जारी करना किंतु जहाँ चर्चा होउची एसपी तदंत निर्देश देइचंती एवं तदंत जारी रही कार्यानुष्ठान खूब शीघ्र हम तो तदंत किए करुँच सब निर्भर करुच्ची किंतु जहाँ अनुमान कर हुए तो डीएसपी पाइबार कौन अधिकारी तदंत करते कारण कोलाबिरा थाना अधिकारी को तदंत दायित्व दिगले हुए तो काले तदंत बायस्ड हम काले तदंत निरपेक्ष न हम तेणु स्थानीय जो एसडीपीओ थे डीएसपी थे हुए तो तदंत दायित्व दि जाइए से तदंत रिपोर्ट केबे सबमिट करुँच रिपोर्ट सबमिट होगा रिपोर्ट रे कौन से उल्लेख करुँच रिपोर्ट को पाइबा एसपी कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर एसपी पर समय आईजी को कौन जनाऊँ गोटे लंबा सीरीज चलो तो निहत गोटे चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होती जमीक आम देखिले नव दास आसासिनेसन जो है जड़े पुलिस कर्मचारी गुड़ी कर हत्या कले से मामला लोक नजर न हटुणु पुणी थे से ब्रजर नगर कहवा जदि से झारसुगुड़ा जिले में पुणी थे आउ गोटे कांस्टेबल जड़े पूर्वतन विधायक को हत्या धमक देवा आलोचना करवा बंदूक पाखे थी डिस्कसन करवा निहत कहवा जे राज्य आउ गोटे प्रकार कहवा चर्चार लहरी खेली जाइए किंतु वर्तमान अपेक्षा रही एसपी झारसुगुड़ा स्पीड परमार कौन प्रतिक्रिया रखुच्च प्रतिक्रिया सबकि निर्भर करुँची तदंत रिपोर्ट से पाई ना केबे सुधा पाइबे जदि पाई कार्यानुष्ठान कौन ग्रहण कारण गत सप्ताह गत गुरुवार दिन जहाँ कहुए गत सप्ताह गुरुवार दिन घटना आज आसी मंगलवार है तदंत एत समय जारी नथिबो हुए तो 2 ରୁ 3 दिन भितर तदंत शेष होइतिबो जदि 2 ରୁ 3 दिन भितर से थ्योरी की तदंत शेष कथा कहबा हुए तो शनिवार सुधा तदंत शेष होइतिबो एवं जदि शनिवार तदंत शेष होला रविवार छुट्टी दिन अछि छाड़ी दियंतु सोमवार दिन तो निहाती भाबे ए तदंतर रिपोर्ट एसपी को टेबल पर रहिबा कथा एवं जदि गतकाली सुधा एसपी को टेबल पर रिपोर्ट पहुंची तबे एसपी कोन कार्यानुष्ठान ग्रहण करचंती ना एसपी एबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करचंती ताकू मध्ये अपेक्षा रहिछि नबेस एवं ए भितर जेतबे हम खबर को देखुचे निश्चित बहु गुरुत्वपूर्ण खबर एति पई कि राज्य रे गोटिए खबर हईचे सृष्टि करतला जो भली भाबरे दिन दी परे जने कैबिनेट मंत्री को एसआई हत्या करे गले कले एवं ता परे परे जो चर्चा चली जे केते सुरक्षित माने ए बड़ बड़ पाइहार मंत्री हुंतु कि विधायक
विधायक हूँ केते सुरक्षित एवं तार भितर आउ एक खबर जो पूर्वतन विधायक अनुप साई को जो भली भाव हत्या करने षड्यंत्र कथा सामना को आसी निश्चित भाव में सुरक्षा दृष्टि गुरुत्वपूर्ण एवं जदि आम घटना को देखुचे पुलिस ए घटना को गुरुतर सह नहीं कारण पूर्व ही खाकी उपरे दाग लगी जाता जड़े एसआई एभली योजना कले किंतु किभली केही जानी पारिले नाही एवं वर्तमान सेहिति पई हुए तो आमे कहि परिबा जे ए घटना को गुरुतर सह निया जायछि एवं तुरंत जिला मुख्यालय को सरोज दास को बदली करा जायछि एवं गत गुरुवार घटना एवं आज जदि घटना को चर्चा करूछे ताले निश्चित ए घटना को नै तदंत चलीछि एवं तदंत परे रिपोर्ट आसीबा परे विभागीय तदंत आरंभ होईछि एवं रिपोर्ट आसीबा परे ही परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। जितेंद्र देवता अधिक आलोचना आम सहित अच्छा झारसुगुड़ा जितेंद्र झारसुगुड़ा आउ एक खबर बर्तमान चर्चा को आसिलानी तदंत रिपोर्ट को अपेक्षा रही तदंत रिपोर्ट तो निश्चित आसिबो एसपी परमार कौन किसी सूचना देलेनी के नहीं देखु गोटे गोटे घटना एपर्यंत कहारी मनरू न लिभुणु आउ गोटे घटना एवं समस्त को चकित कर जदि कहवा जो घटना चर्चा होची जे कोलाबिरा थाना रे कार्य कांस्टेबल जी अच्छा से पूर्वतन जो ब्रजराजनगर पूर्वतन एमएलए थिले अनुप साई को कौटी ना कौटी हत्या करिए बोली जहाँ कौन सी जगार से कहूले जोटा कि चर्चा होची एवं यही घटनाटी आम पुलिस सूत्र जहाँ जानिया पाइलु यही घटनाटी होची फेब्रुआरी 8 तारिख दिन एवं जो कार्यरत थिले सरोज दास जी कांस्टेबल अच्छा से कोलाबिरा थाना रे मद्यपान करी कौटी ना कौटी हल्लागुला करुले जे से कौटी ना कौटी अनुप साई जी अच्छा से कौटी हत्या करिए बोली जहाँ कि जो थाना अधिकारी अच्छा कोलाबिरा थाना अधिकारी अच्छा कान को एक कथाटी जाइथिला एवं से खबरटी संगे संगे से झारसुगुड़ा एसपी को नजर को आनी जो फल से तांकु जो सरोज दास अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर जो रिजर्व रे तांकु अटैच करा जायतिला एवं आमे एसपी को जोगाजोग करथिलु एसपी को कहवा हिसाब रे जे एपर्यंत कोनोसी आम हाथ रे ऑडियो वीडियो विजुअल हस्तगत हेई नाही तथापि आमे इनक्वारी करूछु इनक्वारी कला परे जहाँ भी स्पष्ट हम ताहा समस्त को किंबा गणमाध्यम जो प्रतिनिधि अच्छा से आम जनइबू बोली कहते जो झारसुगुड़ा एसपी अन्यपटे जदि कहबा जे गोटे घटना एबे पुलिस एएसआई अभियुक्त जी अच्छा गोपाल दास दिन द्विपहर पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को हत्या करथिले गोटे घटना जहाँकि एपर्यंत तार कारण स्पष्ट होई नाही अन्यपटे पुणी थरे गोटे कथा एवं पुणी चर्चा आरंभ हो गलानी जे जो कोलाबिर थानार जो कांस्टेबल अच्छा से कौटी ना से कौटी मद्यपान करी थाना परिसर भितर अनुप साई को हत्या करिए बोली कहते जोटा कि एवं समस्त को चकित कर सारा झारसुगुड़ा जिले में चांचल्य सृष्टि करिछि। जितेंद्र एक कथा भी कह जाउछि से निशासक्त अवस्था एभली किछि कहिथिले ना या पछरे किछि षड्यंत्र रहिछि ताकु नै जो छानबीन आरंभ होइछि छानबीन कोन जणा पडिलानी एवं जेतेबेले थाना रे एभली घटना घटिला जो माने उपस्थित थिले समानक तरफ किछि सूचना मिलिछि कि देखु आम कोलाबिरा थाना आईएससी सहित किसी समय पूर्व जोगाजोग करूँ से कहवा हिसाब से ये घटनाटी होची फेब्रुआरी 8 तारिख दिन पुणी फेरबी आपण पाखक बर्तमान अवसर प्राप्त पुलिस अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी सार आम सहित जोड़ी होते श्रीजुक्त त्रिपाठी स्वागत आपन को पुलिस उपरे जो बारंबार प्रश्न उठू जड़े एसआई एभली कले एसआई गोपाल दास बर्तमान से चौद्वार जेल रे अछती बर्तमान आउ जड़े नारे एभली अभियोग आसी जो प्रतिशोध कथा कह जाउची बर्तमान तदंत जेतु चली छानबीन करा जाउची ए घटना को नहीं आगामी कार्यपंथा कौन रहिबो पुलिस कर को घटना आज्ञा जो झारसुगुड़ार जो पूर्वतन जी विधायक अच्छा आम जब कह अनुप साय ब्रजराजनगर हत्या योजना कर जड़े कांस्टेबल एवं से निशासक्त अवस्था थाना परिसर एभली कथा कहते इनक्वारी करथबे निश्चय से विषय जदि कहते थाना परिसर भितर क्या कार्यानुष्ठान निश्चय निया से कहते कि न कहते से इनक्वारी भी हो कौन होची मते आपण पचारले म एंटी केमती कहबी आगे बर्तमान जदि श्रीजुक्त त्रिपाठी ए घटना को कार्यानुष्ठान होइछि ताको जिला पुलिस मुख्यालय को बदली करा जाइछि एवं छानबीन करा जाउछि रिपोर्ट को अपेक्षा रहिछि जेतबेले रिपोर्ट आसीबो ता परवर्ती कार्यानुष्ठान कोन हेइ पारे रिपोर्ट आसिले
सस्पेंड करा जाय पारे, चाकरी बहिष्कार करा जाय पारे, गिरफ करा जाय पारे, बहुत कथा ही पारे। तो घटनाटा कौन केते दूर सत्य तापर गुरुत्व देकरी विचार कले बहुत कथा ही पारे। तेबे घटनाटा केते दूर सत्य इनक्वारी रिपोर्ट रे कौन होची बाहरी सारा पर झारसुगुड़ा एसपी कॉन्स्टेबल जिते कही एसपी क्षमता अच्छी से विरुद्ध कार्यानुष्ठान नहीं पारे निश्चय। श्रीजुत त्रिपाठी हुए तो सरोज दास निशासक्त अवस्था थिले बोली एक कथा जानिदेले समस्त अबा थाना परिसर से कहीदेले जदि एक कथा से कही नथांते अबा एवं एभली षडयंत्र करिथांते कारण पूर्व तो आमे देखिचे गोपाल दास जेभली दिन दीपरे हत्या करथिबा कथा सामना को आसीची। हां कोन आपण प्रश्नटा कोन आगे मुसे पचारची जे बारंबार एभली कथा आसुची जे पुलिस रो माने विभाग रे थाई एभली जो कार्य करूछंती तार पुलिस रो कार्यदक्षता एवं जो सुरक्षा को नै मध्ये प्रश्न उठाउची। तो एटा तो निश्चय कथा आपण जो कथा कहउचंती तबे एमिति केमति होची कोन करा जाय परिबो एथिरे पुलिस विभाग को तो संपूर्ण भाव में उठे दिया जाय परिबो नाही। जो पुलिस कर्मचारी माने कथा कहउचंती से माने कोन पय कहउचंती ता ऊपर वर्तमान गोटे इनक्वारी कमिशन बसिबा उचित। इनक्वारी कमिशन चापरे रही कि जदि पुलिस कर्मचारी माने एपरी कथा कहते से तो अति सांघातिक से गोटे कमिशन बसवा उचित यापर इनक्वारी हवा उचित यापर बहु कथा करा उचित। मु अल्प दिन तले मुझी पुलिस कर्मचारी माने बर्तमान चापर रही बहु प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती भर किए निजको संयत कर केतबे कौन कौन तार ठीक ठिकाना रुनी जपरिक गोपाल दास जन को जड़े मंत्री की मारदेला तो कहीं सब कथा प्रति ध्यान दबा उचित। आज्ञा धन्यवाद आपनकर प्रतिक्रिया पई अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी थिले श्रीजुत सूर्यमणि त्रिपाठी सर एवं एने ध्यान देबा दरकार एवं कमिशन गठन हेबा दरकार कारण चापरे रहउचंती पुलिस एवं सेठी पई एभली अनेक घटना सामना को आसुची किंतु एटी बड़ कथा जे जो राजनेता रहिचंती जो बड़ बड़ हाई प्रोफाइल लीडर रहिचंती सेमानक सुरक्षा को नै मध्ये प्रश्न उठुची कारण जो माने सुरक्षा देउचंती सेही माने ही हत्या करिबा पई षडयंत्र करूचंती गोटी परे गोटी घटना वर्तमान सामना को आसीची। वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू सर आम सहित जोड़ी होती। श्रीजुत साहू स्वागत आपन को ये जो घटना को नहीं आलोचना करुचे जो ब्रजराज नगर पूर्वतन विधायक अनुप साई को हत्या करने षड्यंत्र होता 2016 घटना को नहीं व्यक्तिगत शत्रुता एवं तापर हत्या षड्यंत्र कौन कहे देखो जहाँ आज खबर कागज आसूर विभिन्न टेलीविजन चैनल जो चर्चा होची अनुप साई को हत्या करने गोटे योजना कराइला से योजन जड़े पुलिस रही कर्मचारी रही जहाँ संपर्क को हत्या करा अभियोग होता भौणी एवं झील हत्या करा अभियोग होता तो कौन ना कौन जगह पुलिस टे सुराग पाई से थाना भितर हत्या धमक दौरा किसी लोक शुणी एक कथा जिते उच्च पुलिस अधिकारी नजर को आसी पुलिस हेडक्वार्टर को बदली कर निश्चित भाव में आम देखुचे जो राजनैतिक नेता प्रति किसी असहिष्णुता बढ़ुची आम देखुचे असहिष्णुता साधारणतः आप माने जनसाधारण तरफ आसी था किंतु एटी आम देखुचे जे पुलिस विभाग में चाकरी कर किसी लोकंर असहिष्णुता गोटे बढ़ुची तो ये आम निश्चित भाव में प्रत्येक जी जो वृत्ति था ना कहीं एवरीबडी जे ह्यूमन बीइंग एवं समस्त गोटे ह्यूमन साइकोलोजी विभिन्न द्वारा अफेक्टेड होता है केतबले जो निजर आपनकर आर्थिक प्रलोभन द्वारा अफेक्टेड होता है केतबले पर्सनल जोटा लॉसेस होता है से द्वारा अफेक्टेड होता है कि पर्सनल ट्रेजेडी केतबले सामना करथांती ह्यूमन साइकोलोजी अफेक्टेड होता है एवं दैट से जो अफेक्टेड साइकोलोजीटा आपनकर माने जेकोसी काम करबा पई गोटे बेले बेले नकारात्मक भाव में प्ररोचित करता है। एठी हम देखुचे एठी जो कथा सामना को आसी एठी उक्त पुलिस जो कनेस्टेबल अच्छा से प्रतिशोध नापी चेष्टा करते कारण सी होती से व्यक्ति जहाँकर भौणी एवं झील को हत्या करा
तो से गोटे साइकोलोजी अफेक्टेड होती निश्चित भाव में ये सब दिग को नहीं कि जहाँ श्रीजुक्त त्रिपाठी श्रीजुक्त साहू कहते कि पुलिस मान जो चापर रोचे से सब दिग को नहीं गोटे आलोचना होगा दरकार कमिशन गठन करा दरकार कहीं घटुची कारण यहाँ भल नुहे सुरक्षा दृष्टि राज्य ठीक नुहे। धन्यवाद आपंकर प्रतिक्रिया। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. पुणी गोपाल मानसिक स्थिति जांच हेब चौद्वार जेल रे जांच पाई कोर्ट देइचंती परामर्श। निम्स बेंगालुरु रे गोपाल मानसिक स्थिति जांच पाई झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करिथिला क्राइम ब्रांच। यह आवेदन को खारज कर दैछंती झारसुगुड़ा कोर्ट। गोपाल को चौद्वार जेल मध्य विशेषज्ञ डाक्तर पैनल जरिया मानसिक परीक्षा कराइबा कोर्ट परामर्श दैछंती। एमिति अवस्था रे एबे भी द्वंद्व रे क्राइम ब्रांच। नवदास हत्यार कारण एबे भी अस्पष्ट रही। पूर्व गुजरात रे मानसिक स्थिति जांच होइतिला, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कर दैथिला। आवश्यक हेले क्राइम ब्रांच तल कोर्टों राय को उपर कोर्ट रे चैलेंज करियो बोली सूचना दैछि। अर्थात यह स्पष्ट करुछि नवदास हत्या मामला रे क्राइम ब्रांच तदंत एजाएं शेष होइनी। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य सदस्यों आंदोलन। प्राय 30,000 संख्यार महिला एकजुट होई भुवनेश्वर रणहुंकार देइथिले। पारिश्रमिक वृद्धि सहित 10 दफा दाबी नहीं गर्जिथिले मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य। विजु श्रमिक संघ अधीन में आसुवा ऑल ओडिशा जीपीएलएफ मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य पक्षर आंदोलन कर जीपीएलएफ रो समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को स्थायी नियुक्ति, पारिश्रमिक और गस्त खर्च वृद्धि, ईएसआई सुविधा सहित चिकित्सा भित्तिक छुट्टी प्रदान करने by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. ब्रेक पर स्वागत। मंत्री नव दास को केमिति मारिथिले गोपाल, सही समय ए प्रश्न को नहीं अनेक उत्तर आसीथिबा बेले आज ताहा स्पष्ट होईछि। गोपाल एक एक्सक्लूसिव फोटो सामना को आसीछि जेउथरे गोपाल छिड़ा होइतिबार नजर आसुछि एवं तांकर पोजिशन रही से गुली मारुथिबार जणा पडुछि। दीर्घ दिन पर सामना को आसिला मंत्री नव दास को एएसआई गोपाल दास गुली चलाइबा समयर फोटो। नव दास कार ओह्लाउथिबा बेले कार डोर पाखरे ही छिड़ा होइछंती गोपाल एवं एया परे दुई हातरे बंदूक को धरी गुली मारुथिबार भी जणा पडिछि। बंदूक धरिथिबा जदिओ जणा पडु नाही किंतु तांकर हाथ पोजिशन रु से गुली चलाउथिबा जणा पडिछि। गोपाल बंदूक रु फायरिंग करुथिबा भली मुद्रा रे छिड़ा होइथिबा जणा पडिछि। नवदास गाड़ी रु ओह्लाइबा मात्रे गोपाल दुई हातरे बंदूक रो सामना रु गुली मारुछंती। पूर्व हत्या बेलर एकाधिक वीडियो आपण देखिछंती किंतु जोथरे गोपाल स्पष्ट भाबे देखा जाउ नथिले। मात्र एई फोटो रे बंदूक देखा जाउ नाही किंतु अभियुक्त गोपाल को पोजिशन स्पष्ट बारी हेई पडुछि। आज आरंभ हो विधानसभा बजेट अधिवेशन। राज्यपाल अभिभाषण आरंभ हो अधिवेशन हेले विरोधी और शासक दल आगे प्रसंग अनेक थिबारु एथर कंपिब विधानसभा बजेट अधिवेशन। गृह रे मुहामुही हेबे शासक एवं विरोधी। आईन श्रृंखला चाषी प्रसंग उठाइबे विरोधी एवं केंद्रीय अवहेला को अस्त्र करिब शासक दल। एथिपाई सजबाज होइछंती समस्ते। हुलुस्थुलु होई पारे गृह एवं विधानसभा रे मुहामुही हेबार संभावना रहिछि। मंत्री नव दास हत्याकांड और आईन श्रृंखला स्थिति को नहीं सरकार को किछि दिन तले घेरिथिला बीजेपी एवं विधानसभा भितर भी समान प्रसंग रे घेरिबाकू विधायक दल बैठक में रणनीति प्रस्तुत होइछि। कांग्रेस भी नव दास हत्याकांड रे कार्यानुष्ठान आईन श्रृंखला स्थिति को प्रमुख प्रसंग करिबो। ताछड़ा डीजीपी निरापत्ता और क्राइमब्रांच तदंत नहीं प्रश्न उठाइबे। चाषी समस्या, मंडी धान न उठिबा, बेकारी समस्या को नहीं सरकार को घेरिबो दल। मात्र विरोधी को काउंटर करबा पई शासक दल भी प्रस्तुत। बीजेडी पाखरे एकाधिक प्रसंग। 5 केजी चाउल काटा छड़ा धान संग्रह 20,000 कोटी ह्रास, बकेया सब्सिडी मिलूना, स्वतंत्र राज्य पाह्या दाबी मिलूनी। ए सबू नहीं सहित विरोधी दल नेता महिला आईएएस दुर्व्यवहार सबू प्रसंग को नहीं शासक दल भी प्रस्तुति करिछि। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed.
गोपालଙ୍କ मानसिक स्थिति जांच हेब चौद्वार जेल रे जांच पई कोर्ट दैचंती परामर्श निम्स बेंगालुरु रे गोपालଙ୍କ मानसिक स्थिति जांच पई झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करिथिला क्राइम ब्रांच ए आवेदन को खारज कर दैचंती झारसुगुड़ा कोर्ट गोपालଙ୍କୁ चौद्वार जेल मध्य विशेषज्ञ डाक्तर पैनल जरिया मानसिक परीक्षा कराइबा कोर्ट परामर्श दैचंती एमिति अवस्था रे एबे भी द्वंद्व रे क्राइम ब्रांच नवदास हत्यार कारण एबे भी अस्पष्ट रही पूर्व गुजरात रे मानसिक स्थिति जांच होइतिला पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कर दैथिला आवश्यक हेले क्राइम ब्रांच तल कोर्टଙ୍କ राय को ऊपर कोर्ट रे चैलेंज करियो बोली सूचना दैछि अर्थात यह स्पष्ट करुछि नवदास हत्या मामला रे क्राइम ब्रांच रो तदंत एजाएं शेष होइनी। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य सदस्यों आंदोलन प्राय 30,000 संख्यार महिला एकजुट होई भुवनेश्वर रणहुंकार देइथिले पारिश्रमिक वृद्धि सहित 10 दफा दाबी नहीं गर्जिथिले मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य विजु श्रमिक संघ अधीन आसुथुबा ऑल ओडिशा जीपीएलएफ मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य पक्षरु आंदोलन करा जायतिला जीपीएलएफ रो समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को स्थायी नियुक्ति पारिश्रमिक और गस्त खर्च वृद्धि ईएसआई सुविधा सहित चिकित्सा भित्तिक छुट्टी प्रदान करने समेत सामुख्य पक्षरु 10 दफा दाबी रखा जायछि याको समर्थन कर आंदोलन में सामिल होते विजु श्रमिक सामुख्य महासचिव सुभाष सिंह एवं कोठाबाड़ी और निर्माण श्रमिक बोर्ड अध्यक्षा श्रीमयी मिश्र केन्द्र सठिक पावना जोगे देऊ नचेत आग को आंदोलन को व्यापक करा बोली धमक देछि सामुख्य राज्य सरकार प्रतिनिधि पर सामुख्य आंदोलन ओहरी जाइछि। बालेश्वर जिला सोर पुरुबाई कन्याश्रम मस्तिष्क ज्वर आतंक जड़े अंतेवासी मृत्यु और 25 रु अधिक गुरुतर पुरुबाई कन्याश्रम और सोर डाक्तखाना पहुंची राज्य स्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर निरंजन मिश्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति परखिंट बालेश्वर जिलापाल घटनास्थल पुरुबाई कन्याश्रम को जाई स्थितिर जांच करछंती कन्याश्रम रक्त नमूना संग्रह कर 5 जन मस्तिष्क रोग में आक्रांत होइतिबा जणा पड़िछि गत गुरुवार राति रे भागवतर अष्टम स्कंदरे अछि गज उदाहरण उपाख्यान पानी रे फसिथिबा हाथी को श्रीहरि केमिति कुंभीर मुहरु उद्धार करूछंती एठी आमे आज जेउ कथा कहिबाकू जाउछु बा जहा देखाइबाकू जाउछु वर्तमान सारा विश्व रे ताकू नै चर्चा निजर कर्मकांड पई आज देवालिया अवस्था को आछि पाकिस्तान अर्थनैतिक दुरावस्था एठी कुंभीर साजिथिबा बेले हाथी भूमिका निभाई त्राहिमाम डाकुछि पाकिस्तान अर्थनैतिक दुरावस्था नामक कुंभीर केतेबेले जे पूरा देश को ग्रास करदेब एभली स्थिति पाकिस्तान पाई किए साजिब श्रीहरि बा संकट समय पाकिस्तान को किए बंचाइब कारण तमाम देश एबे पाकिस्तान को सहायता करने को मना कर अंतर्जातीय मुद्रा पांठी शाहबाज सरकार आगे रखी बड़ शर्त आ खास से एबे निजर परमाणु सिस्टम को बिक्री करने को बाध्य होइछि। नमस्कार मु गायत्री चलंतु आरंभ करबा आज स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान अवस्था वर्तमान अति दयनीय चारिआडे हाथ पताइबा परे भी ऋण न मिलिबा परे एबे पाकिस्तान घाबरे जाइछि अंतर्जातीय मुद्रा पांठिरु ऋण न मिलिबा परे एबे पाकिस्तान सरकार मुस्लिम देश को निजर परमाणु अस्त्र बिक्री करबा नै योजना करूछंती पाकिस्तान प्रतिरक्षा विशेषज्ञों कहवा कथा जदि देश को ऋण न मिलिब तेबे परमाणु अस्त्र बिकिबा को सरकार बाध्य हेबे ऋण पाइबा को पाकिस्तान रो नुआ चाल मुस्लिम देशगुड़ी को परमाणु अस्त्र बिकिबा को धमक परमाणु अस्त्र बिकी टंका जोगाड़ करिबो पाकिस्तान कांगाल पाकिस्तान रो अवस्था वर्तमान एमिति होई जाइछि जे ऋण नेबा पई एई देश किछि भी करि पारे एबे एहार मोर्चा संभाळिछि पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा क्षेत्र पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ए विषय किछि भी खोलाखोली कहू नाहंती मात्र प्रतिरक्षा क्षेत्र पक्षरु बयानबाजी आरंभ हो जाइछि गोटे पटे शाहबाज शरीफ कहउछंती जे आईएमएफ रो शर्त मानिबाकू से राजी अछंती
अन्यपटे पाकिस्तान प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ए विषय खुलमखुला बयान देउछंती। हम मजबूर है, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें। पाकिस्तान प्रतिरक्षा विशेषज्ञ खोलाखोली कहउछंती जे आईएमएफ ऋण न देले देशर परमाणु अस्त्र गुड़ी को पड़ोसी मुस्लिम देश गुड़ी को सरकार बिक्री करने को बाध्य हेबे। एने प्रतिरक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान सरकार को परामर्श देउछंती। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। पाकिस्तान पक्षरु स्पष्ट भावे कहा जाउछि जे देश कदापि एनटीपी अर्थात ट्रिटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रे दस्तखत करिबो नाही। सेति पय सेमाने निजर परमाणु अस्त्र को बिक्री करि परिबे आ इहा को नै पाकिस्तान को कोनोसी फरक पड़िबो नाही। एथिरु स्पष्ट अनुमेय जे निजर आर्थिक स्थिति रे सुधार आनिबाकू एवं ऋण सुझिबाकू पाकिस्तान निजर परमाणु अस्त्र बिक्री करि पारे। यासह परमाणु टेक्नोलॉजी एवं वार हेड मध्य बिक्री करबाकू योजना करुछि पाकिस्तान। पाकिस्तान जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर्तमान चली तादरू उधरिबा पई आईएमएफ रो ऋण तो निहाती दरकार, किंतु कथा उठुछि बा प्रपोजल्स आसुछि जे पाकिस्तान बोधे तार विभिन्न स्ट्रैटेजिक एसेट्स बिक्री करी किछि पैसा रोजगार करबा पई चेष्टा करुछि बा एकठा करबा पई चेष्टा करुछि। एवं कथा उठुछि जे न्यूक्लियर वेपन्स बा न्यूक्लियर मटेरियल्स पाकिस्तान बिक्री करिबो, कथाटा ते सहज नहे। देयर आर वेरियस कंट्रोल रीजन्स जहाँ कि मानी न्यूक्लियर ट्रेड करा जाए। न्यूक्लियर ट्रेड ऑफिशियली करिया पई हेले पाकिस्तान को केवल न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री मानक सहित करिया पई पड़िबो। आ जेपर्यंत न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री मानक कथा अछि, ओपनली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री, समस्त बोधे पाकिस्तान ठारू इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भल पोजिशन अच्छे। पाकिस्तान अवस्था दिन को दिन अति दयनीय हो पड़छि। लोकों पाखरे खाइबा को खाद्य नहीं कि पीबा को पानी मुंदाई भी नहीं। एभली स्थले पूर्व 19 थर ऋण देथिबा अंतर्जातीय मुद्रा पांठी एबे पाकिस्तान को ऋण देबा को मना कर दैछि। सेतिबे पाकिस्तान एबे निजर परमाणु अस्त्र बिक्री करबा को योजना करुछि। एने प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माने मध्य शाहबाज सरकार को विभिन्न परामर्श देउछंती। कथार जो मरता क्या नहीं करता, ड्राउनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ, तेणु पाकिस्तान करले करि पारे। एवं जदि या करे ताले निकट भविष्य रे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भाया पाकिस्तान might also reach the hands of the terrorist, which will be a global catastrophe. So international community बर्तमान mindful हवा दरकार। एवं मु जहाँ कहि आसुछि, it is right time to intervene in Pakistan both militarily and politically to save the international community from the ramifications of a failing Pakistan. तेबे पाकिस्तान अवस्था को देखि प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ देइछंती बड़ा बयान। प्रथमे सुनंतु से कौन कहिछंती। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। राजनैतिक अस्थिरता पाकिस्तान बर्बादर अन्यतम प्रमुख कारण। सेतिपई प्रतिरक्षा मंत्री पूर्व सरकार उपरे मध्य वर्षिछंती। सेबडे पाकिस्तान परमाणु अस्त्र बिक्री करबा खबर आसबा परे सारा विश्व रे हईचई सृष्टि होईछि। कारण मुस्लिम देशगुड़ी को जदि पाकिस्तान परमाणु अस्त्र बिक्री करे ताहा सारा विश्व पई विपद सृष्टि करिवो। एसपीआरआई रो रिपोर्ट अनुसार 2021 जनवरी सुधा पाकिस्तान पाखरे 160 परमाणु हथियार थिबा बेले 2022 सुधा 165 को वृद्धि पाइछि।
2022 रो तथ्य अनुसार पाकिस्तान रे 6टी कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट अछि। पाकिस्तान एनपीटी रे दस्तखत करि नाही, किंतु इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रो सदस्य रहिछि। 2050 सुधा पाकिस्तान 32टी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापन करने को लक्ष्य रखिछि। किंतु यह कौन सत हेब? कारण पाकिस्तान रो वर्तमान अवस्था जहाँ परमाणु केंद्र प्रतिष्ठा परिवर्ते देश निजर परमाणु अस्त्र बिक्री करने को योजना करुछि। आ जदि परमाणु अस्त्र बिक्री करे तेबे पाकिस्तान तालिका रे सर्वप्रथमे रहिछि यूएई। सारा देश रे हाहाकार परिस्थिति, चिंतार पड़ जाइछंती शाहबाज सरकार। नुआ पाकिस्तान रो नारा दे इमरान खान क्षमता दखल करथिले। प्रधानमंत्री हेबा क्षणी आसन रे बसिबा क्षणी से आर्थिक सुधार लागू करिबा आरंभ करथिले। किंतु तांकर आर्थिक सुधार केवल अन्य देशों ठारू ऋण नेबा ही थिला। प्रधानमंत्री हेबा क्षणी विश्वर भिन्न भिन्न देशों पाखरे भिक्षा थाल धरी पहुंची जाइथिले इमरान। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता तांको गादीच्युत करथिला। आ शाहबाज शरीफ को कांधरे लदी दियागला पाकिस्तान भार। हेले से कले कौन? से भी देश को उद्धार करि पारले। देशर निजर प्रतिरक्षा उपकरण एपरिक परमाणु अस्त्र को मध्य बिक्री करने को योजना करुछि, जहाँ देशर भविष्यत पई एक महाविपद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। मरिबा परे भी शांत नाही, कारण मृत्यु परे कबर पाई भी देबाकू पड़िबो टैक्स। ब्रेक पर देखिबा ए संपर्कित खबर। पुणी गोपाल मानसिक स्थिति जांच हेब। चौद्वार जेल रे जांच पई कोर्ट दैछंती परामर्श। निम्स बेंगालुरु रे गोपाल मानसिक स्थिति जांच पई झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करिथिला क्राइम ब्रांच। ए आवेदन को खारज कर दैछंती झारसुगुड़ा कोर्ट। गोपाल को चौद्वार जेल मध्य विशेषज्ञ डाक्तर पैनल जरिया मानसिक परीक्षा कराइबा को कोर्ट परामर्श दैछंती। एमिति अवस्था रे एबे भी द्वंद्व रे क्राइम ब्रांच। नवदास हत्यार कारण एबे भी अस्पष्ट रहिछि। पूर्व गुजरात रे मानसिक स्थिति जांच होइतिला, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कर दैथिला। आवश्यक हेले क्राइम ब्रांच तल कोर्टों राय को ऊपर कोर्ट रे चैलेंज करियो बोली सूचना दैछि। अर्थात यह स्पष्ट करुछि नवदास हत्या मामला रे क्राइम ब्रांच रो तदंत एजाएं शेष होइनी। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य सदस्यों आंदोलन। प्राय 30,000 संख्यार महिला एकजुट होई भुवनेश्वर रणहुंकार देइथिले। पारिश्रमिक वृद्धि सहित 10 दफा दाबी नहीं गर्जिथिले मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य। विजु श्रमिक संघ अधीन रे आसुथुबा ऑल ओडिशा जीपीएलएफ मिशन शक्ति कर्मी पाकिस्तान लोक खाइबा को पाउनाहांती। विदेशी मुद्रा अभाव बंदर रे माल सेमिति पड़ी रही। एभली स्थले विभिन्न देश गुड़िक साहाय्य करने को भी मना कर दैछंती। अंतर्जातीय मुद्रा पांठिर शर्त को शाहबाज सरकार मानिबा को नाराज। एमिति समय केमिति बंचिबो देश? अन्यपटे घोर आर्थिक संकट दे गति करुवा पाकिस्तान रे एबे किछि कंपनी उत्पादन ठप कर दैछंती। गत किछि मास धरी पाकिस्तान रे थिबा विभिन्न कंपनी सेमानक उत्पादन को बंद रखिथिबा बेले केबे खोलिबो ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट करि पारनाहांती। सेहिपरि कबर उपरे मध्य कर लागू करबा को पाकिस्तान सरकार एबे योजना करूछंती। देखंतु रिपोर्ट। पाकिस्तान अवस्था सांघातिक। बंद हैला पाकिस्तान अनेक कंपनी। कवर पाई टैक्स गणिबे पाकिस्तानी। दिनकु दिन सांघातिक हेबारे लागिछि पाकिस्तान स्थिति। पाकिस्तान ने गहम, गैस और चाउलर घोर अभाव देखा देछि। खाद्य शस्य भंडार खाली हेउथुबारु पाकिस्तान सरकार अन्य देशरू गहम आणुछंती। पियाज एवं टमाटो दर मध्य आकाश छुआ। दरदाम वृद्धि पाकिस्तान बासी को आक्ता माक्ता करि पकाइछि।
साधारण लोकटीए खाद्याभावर शिकार हेउछि। स्थिति एभली होइछि गोटिए गहम बस्ता पई लोकंक मध्यरे हाताहाती परिस्थिति सृष्टि हेउछि। पूरा अवस्था देखिले लागुछि जे खूब शीघ्र पाकिस्तान नीलाम हेबाकु जाउछि। घोर आर्थिक संकट दे गति करुथुबा पाकिस्तान ने एबे किछि कंपनी उत्पादन ठप करि दैछन्ति। गत किछि मास धरी पाकिस्तान थिबा विभिन्न कंपनी सेमानकर उत्पाद को बंद रखिथिबा बेले केबे खोलिबो ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट करि पारु नाहंती। विशेषकर पेट्रोल डीजेल दर आकाश छुआ हेबा परे एहार सीधा प्रभाव जानवाहन उपरे पड़िछि। लोकंक पाखरे पेट्रोल पकाइबाकू पैसा नथिबारु कार चलाइबा तो दूरर कथा बाइक मध्य चलाई पारु नाहंती। रिपोर्ट अनुसार गत जनवरी पाकिस्तान ने कार व्यवसाय प्राय 65% कमिछि। घरोई कंपनी सुजुकी मोटर कप दीर्घ दिन धरी उत्पादन बंद रखिथिबा बेले फेब्रुआरी 21 पर्यंत एहाकू वृद्धि करिछि। पार्ट्स अभाव जोगु कंपनी उत्पादन बंद रखिथिबा कहिछि। सेहिपरि विभिन्न टायर रबर और ट्यूब कंपनी मध्य सेमानकर उत्पादन बंद करि दैछन्ति। आर्थिक दुरावस्थार प्रभाव खाली ऑटोमोबाइल सेक्टर उपरे पड़िनी बरं सार स्टील और विभिन्न बयन शिल्प उपरे मध्य पड़िछि। कंचामाल अभाव अनेक कंपनी सेमानकर उत्पादन बंद करि दैथिबा बेले किछि संपूर्ण शटडाउन करि दैछन्ति। अन्यपटे पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार खाली हेबारे लागिछि। मात्र 3.19 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा थिबा बेले एहा खूब शीघ्र शेष होइजिबो। पाकिस्तान ने एबे क्षीर लिटर 250 टंका, चिकेन केजी 780 टंका रही। पेट्रोल लिटर 272, डीजेल 280 टंका रही। मुद्रास्फीति चलित सप्ताह रे प्राय 40% को बढ़ी। $1 विनिमय मूल्य प्राय 263 पाकिस्तानी टंका रही। अर्थ संकटरू मुकुलिबा पई शेष आसरा पालटी थिबा IMF रो 7 बिलियन डॉलर जरूरीकालीन ऋण पैकेज भी पद्म घुंचिला भली घुंची घुंची जाउछि। एहारी भितरे अंतर्जातीय मुद्रा पांठी बा IMF रो परिचालना निर्देशक क्रिस्टालिना जॉर्जियाभा देइछन्ती बड़ मंतव्य। से कहिछन्ती जे गरीब लोकंकु सुरक्षा देबा एवं धनी लोकंकु टिकस देबा आवश्यक। एथि सहित से पाकिस्तान सरकार को मध्य कहिछन्ती जे एही सब्सिडी केवल सही लोकंकु दिया जाऊ। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में एक साक्षात्कार रे IMF मुख्य कहिछन्ती मोर सहानुभूति पाकिस्तान लोकंक सहित अछि। देशर 1/3 जनसंख्या को प्रभावित करिथिबा बन्या जोगु सेमानकर आर्थिक मेरुदंड भांगी जाइछि। से कहिछन्ती आमे जहा पचारुछु ताहा हेउछि एक देश भावरे कार्य करिबाकू समर्थ हेबा पई पाकिस्तान को केउ पदक्षेप नेबाकू पड़िबा एवं पाकिस्तान एभली करिबाकू किंतु प्रस्तुत नुहे। संकटजनक परिस्थिति जेउठारे देशर ऋण पुनः निर्माण हेबा आवश्यक। सेहिपरि क्रिस्टालिनांकर कहिबा कथा दुईटी विषय उपरे ध्यान देबा जरूरी। प्रथमटी हेउछि टिकस राजस्व जेउ माने पारिबे जेउ माने सरकारी किंबा बेसरकारी क्षेत्र में भल अर्थ उपार्जन करुछन्ति सेमाने अर्थनीति रे सहयोग करबा आवश्यक। द्वितीय केवल जेउ माने प्रकृत रे आवश्यक करन्ति सेमानकु सब्सिडी प्रदान करा जिबा जरूरी। IMF मुख्य कहिछन्ति जे एहा हेबा उचित नुहे जे धनी माने सब्सिडी रु लाभवान हेबे। एहा गरीब लोकमानक पई हेबा उचित जेउ माने एथिरु उपकृत हेबे। एथि पई पांठी स्पष्ट। पाकिस्तान गरीब लोकंकु सुरक्षा दिया जिबा उचित बोली से कहिछन्ति। गोटे पटे अर्थनैतिक दुरावस्था जारी रहिथिबा बेले पाकिस्तान पय मुंडबिंधार कारण पालटिछन्ति तालिबान और टीटीपी। 2 दिन पूर्वे कराची पुलिस मुख्यालय उपरे हमला करथिले टीटीपी आतंकवादी। यह सहित पाकिस्तान ने सरिया आईन लागू करने को एही आतंकवादी माने अड़ी बसिछन्ति।
आउ एबे पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमारे उत्तेजना लगी रही। पाकिस्तान पुलिस और अफगानिस्तान तालिबानी मध्य गुली विनिमय होईछि। सोमवार सकाळु तोरखाम सीमारे तालिबानी माने अनुप्रवेश करने को उद्यम करुथिले। एही समय पाकिस्तान सीमारे मुतयन पुलिस सेमानकु अटकाइबारु उभय पक्ष मध्य गुली विनिमय होईछि। तोरखाम सीमारे अफगान किछि रोगी और सेमानकर संपर्कीय चिकित्सा पाई बिना अनुमति रे पाकिस्तान भीतर को प्रवेश करुथिले। पाकिस्तान ने प्रवेश पाई अनुमति डॉक्यूमेंट नथिबारु सेमानकु पाकिस्तान भीतर को प्रवेश करने को अनुमति दिया जाय नथिला। एहाकु नै पाकिस्तान पुलिस और तालिबानी मध्य संघर्ष होइथिबा कहा जाउछि। उभय पक्षों मध्य गुली विनिमय होइथिबा पाकिस्तान पुलिस सूत्ररु जणा पड़िछि। पाकिस्तान तार इकोनॉमी की केबे निजे निजर भित्तिभूमि उपर ठिया करिया पे चेष्टा करे नाही। फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इट हैज बीन ए डिपेंडेंट कंट्री। प्रथमे अमेरिका उपर एवं सब्सिक्वेंटली चाइना उपर। तेणु बर्तमान जेहेतु चाइना एवं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डोल आउट्स बंद कर देइछन्ती एवं स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करबा पई चाहुचन्ती। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर इज देयर डेस्टिनेशन इन दैट सेंस। तेणु पाकिस्तान इकोनॉमी ऑलरेडी in problems. Coupled with that, the universal problem जो गत 2 वर्ष रे समस्त एक्सपीरियंस कले, which is the COVID pandemic, and thus in the last year unfortunately there was massive flood in Pakistan. तेणु ये combinedly पाकिस्तान को गोटे बड़ इकोनॉमिक क्राइसिस भीतर ठेली देछि। अन्यपटे पुणी थरे भारत उपरे भरोसा करने को इच्छा प्रकाश करिछि पाकिस्तान। जने पूर्वतन वरिष्ठ अधिकारी एक कार्यक्रम में जोगदे भारत कथा उठाइछन्ति। से कहिछन्ति जे वर्तमान भारत सहित आलोचना पाई पाकिस्तान चाहुछि। पाकिस्तान भारत सह कथा हेबा आवश्यक। सेबटे पाकिस्तान विभिन्न प्रदेश रे मोदी को उद्धार करने को विभिन्न अनुरोध सुनिबा को मिलुछि। सेठाकार लोक माने भारत को सहाय्य करने पाई अपील करिछन्ति। तेबे पाकिस्तान एभली अवस्था राताराति कदापि होई नाही। एठाकार अस्थिर राजनीति एही देश को बर्बाद करि देछि। ऋण परे ऋण एवं दुर्नीतिर पहाड़ एही देश को कांगाल करि देछि। तेबे रिपोर्ट अनुसार देश उपरे एबे 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी मुद्रार ऋण बोझ अछि। यह देश जीडीपी रो 89%। तेबे मोट ऋण मध्यरु 35% केवल चीन भागीदारी अछि। अर्थात सबुठु अधिक ऋण पाकिस्तान चीन ठारु आनिछि। पाकिस्तान उपरे एबे चीन 3000 कोटी डॉलर ऋण अछि। यह 2022 फेब्रुआरी रे प्राय 2500 कोटी डॉलर थिला। एबे सही चीन मध्य पाकिस्तान को नै खपा हो जाइछि। एपरि कि चीन ने पाकिस्तानी को नो एंट्री करि दैछि। पाकिस्तानी को वीसा देबा को मना करि दैछि बेजिंग। एपरि कि पाकिस्तान थिबा निजर दूतावास को मध्य बंद करि दैछि चीन। एभली स्थिति रे प्रश्न उठुछि, एही स्थिति रु वर्तमान पाकिस्तान जीव कुआडे? कारण आईएमएफ रु ऋण पाइबा नै शाहबाज सरकार जो आशा बांधी बसिछन्ति ताहा पर्याप्त हेबो नाही। क्राइसिस रो पूर्वाभास 2018 मसिया रहितला। सेतबेले ठाରୁ ସେମାନେ आईएमएफ रो पैकेज चाहुतले, किंतु आईएमएफ तांको एते सहज रे पैकेज दबो नै। एथि पई जे 23rd टाइम पाकिस्तान आईएमएफ रो द्वारस्थ होईछि एवं या पूर्व बहुत थर पाकिस्तान प्रॉमिस करिछि जे आईएमएफ रो गाइडलाइंस मानिबो, किंतु सेतरु मुकर जाईछि। तेणु एथरक आईएमएफ टफ कंडीशंस रखुची कि बर्तमान जदि आईएमएफ ऋण चाहे पाकिस्तान ताले सेगुड़ा मानिबा पई पड़िबो। आ सेगुड़ा मानिले पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस आहुरी डिपेंड हबो। एटलिस्ट जो बर्तमान जो सरकार अछि से सरकार ने नेक्स्ट अक्टोबर इलेक्शन में केबे भी जीति परिबो नै। तेणु एटा होछि बर्तमान पाकिस्तान में विडंबना। पाकिस्तान में टोटल इकोनॉमिक क्राइसिस छड़ा political desire and terrorists are mounting pressure on Pakistan system. So it's a systemic collapse that is happening in Pakistan.
आर्थिक बोझरे जुझी हेउथुबा पाकिस्तान लोकंको उपरे सरकार आउ एक टिकस लदी देइछंती। कबर पाई मध्य शरीफ सरकार टैक्स लागू करने स्थिर करिछंती। एहाकु नै पाकिस्तानी मध्यरे देखिबाकु मिलिछि असंतोष। सेहिपरि विलासपूर्ण सामग्री उपरे 25% टैक्स लागू करा जायछि। वस्तु और सेवा कर 18% वृद्धि पाइछि। फल एवं साधारण लोक आहुरी समस्यार सम्मुखीन हेबाकु जाउछंती। महंगा माड़े खाली हेउछि पाकिस्तान पेट। पाकिस्तान वासी को अस्तव्यस्त करि पकाउछि लगातार भाव बढ़ुथुबा दरदाम। सरकार नाचार, लोके बेसहारा। दरदाम वृद्धि कौन, यार प्रभाव किभली पड़े, बोध हुए एबे पाकिस्तानीवासी यार उत्तर भल भाव दे पारिबे। किछि मास धरी पाकिस्तान में लागी रहिथिबा दरदाम वृद्धि एबे आकाश छुआ होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। किए बंचाइबो पाकिस्तान को? निजर गुण जोगु एभली दशा भोगुथुबा आमर पड़ोसी देश नीलाम हेबाकु बसिलानी। आगकु यार अवस्था आहुरी संकटापन्न हेबा, एथिरे संदेह नाही। समय सरिछि। आज पाई स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखिबा। नमस्कार। पुणी गोपाल मानसिक स्थिति जांच हेब। चौद्वार जेल रे जांच पाई कोर्ट देइचंती परामर्श। निम्स बेंगालुरु रे गोपाल मानसिक स्थिति जांच पाई झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करिथिला क्राइम ब्रांच। ए आवेदन को खारज कर दैछंती झारसुगुड़ा कोर्ट। गोपाल को चौद्वार जेल मध्य विशेषज्ञ डाक्तर पैनल जरिया रे मानसिक परीक्षा कराइबाकू कोर्ट परामर्श दैछंती। एमिति अवस्था रे एबे भी द्वंद्व रे क्राइम ब्रांच। नवदास हत्यार कारण एबे भी अस्पष्ट रहिछि। पूर्व गुजरात रे मानसिक स्थिति जांच होइतिला, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कर देइतिला। आवश्यक हेले क्राइम ब्रांच तल कोर्टों राय को ऊपर कोर्ट रे चैलेंज करियो बोली सूचना दैछि। अर्थात यह स्पष्ट करुछि नवदास हत्या मामला रे क्राइम ब्रांच रो तदंत एजाएं शेष होइनी। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य सदस्यों आंदोलन। प्राय 30,000 संख्यार महिला एकजुट होई भुवनेश्वर रणहुंकार देइथिले। पारिश्रमिक वृद्धि सहित 10 दफा दाबी नहीं गर्जिथिले मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य। विजु श्रमिक संघ अधीन आसुथुबा ऑल ओडिशा जीपीएलएफ मिशन शक्ति कर्मी सामुख्य पक्षरु आंदोलन कर जाइतिला। जीपीएलएफ रो समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को स्थायी नियुक्ति, पारिश्रमिक और गस्त खर्च वृद्धि, ईएसआई सुविधा सहित चिकित्सा भित्तिक छुट्टी प्रदान करने समेत सामुख्य पक्षरु 10 दफा दाबी रखा जाइछि। याको समर्थन करी आंदोलन में सामिल होइतिले विजु श्रमिक सामुख्य महासचिव सुभाष सिंह एवं कोठाबाड़ी और निर्माण श्रमिक बोर्ड अध्यक्ष श्रीमयी मिश्र। केंद्र सठिक पावना जोगे देउ नचेत आगको आंदोलन को व्यापक कराजिबो बोली धमक देछि सामुख्य। राज्य सरकार प्रतिनिधि पर सामुख्य आंदोलन ओहरी जाइछि। बालेश्वर जिला सोरो पुरुबाई कन्याश्रम मस्तिष्क ज्वर आतंक, जड़े अंतेवासी मृत्यु और 25 रु अधिक गुरुतर। पुरुबाई कन्याश्रम और सोरो डाक्तखाना पहुंची राज्य स्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर निरंजन मिश्र, जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति परखिंट। बालेश्वर जिलापाल घटनास्थल पुरुबाई कन्याश्रम को जाई स्थितिर जांच करछंती। कन्याश्रम रक्त नमूना संग्रह कर 5 जन मस्तिष्क रोग में आक्रांत होइतिबा जणा पड़िछि। गत गुरुवार राति रे 3 जन अंतेवासी बांति करिया परे सेमानंको सोरो डाक्तखाना को निया जाइथिला। सेठरे अवस्था संकटापन्न हेबारु 2 जन को बालेश्वर जिला आपण माने बर्तमान सीधा सड़क दृश्य देखुछंती। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल बर्तमान आसी पहुंची सारी विधानसभा सम्मुखरे एवं विधानसभार आज बजेट अधिवेशन जेहेतु अच्छी तो तांको स्वागत करुछंती। बजेट अधिवेशन को बाचस्पति एवं उपबाचस्पति सहित अन्य तमाम नेतृवृंद एवं एथर प्रसंग बहुत रही। गृह हुलस्थुल हेबा नै कि मध्य आशा करा जाउछि। विधानसभा परिसर आम से दृश्य देखौछु। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल बर्तमान पहुंची सारी एवं सीधा सड़क जाउछंती अभिवादन ग्रहण करिबा पाई। जो स्थान रे वर्तमान सुरक्षाकर्मी माने उपस्थित अछंती एवं समस्त स्वागत करुछंती राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को ए बजेट अधिवेशन।
विधानसभा परिसर से दृश्य आपण देखुं राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल वर्तमान अभिवादन ग्रहण कर सारी सीधा सड़क उपस्थित अच्छा वर्तमान जो सुरक्षाकर्मी उपस्थित अच्छा गार्ड ऑफ ऑनर से गार्ड ऑफ ऑनर दि जाऊँगी राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल उपलक्षे वर्तमान गार्ड ऑफ ऑनर दि जाऊँगी सीधा सड़क दृश्य आपण देखुं बजेट अधिवेशन आज आरंभ हो प्रथम दिन में गृह कार्य किपरि स्वाभाविक रही पारिबो प्रथम दिन पूरा अधिवेशन काल केमिति गृह कार्य स्वाभाविक रही पारिबो से कि बाचस्पति पूर्व आलोचना करिसेंति उभय शासक दल और विरोधी दलर नेता मानक सह गुड़ाए प्रसंग अच्छी बहुत गुड़े प्रसंग अच्छी उभय विरोधी और शासक दल हाथ में प्रसंग मालमाल अच्छी और से प्रसंग को नहीं गृह कार्य स्वाभाविक होगा कि वर्तमान आशा अच्छी 24 तारीख में पूर्णांग बजेट उपस्थापन अच्छी किंतु ता पूर्व जेहेतु विधानसभा बजेट अधिवेशन आज प्रथम दिन विधानसभा परिसर आपण दृश्य देखुंट बाचस्पति विक्रम केसरी आरुख वर्तमान पाछड़ी नहीं राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को सहित संसदीय व्यापार मंत्री उपस्थित थे तो डेप्यूटी स्पीकर रजनीकांत सिंह उपस्थित थे विधानसभा परिसर आम सीधा सड़क दृश्य देखु किसी समय रही अपेक्षा रहा जिते कि राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल अधिवेशन को अभिभाषण दे संबोधन करेंगे और आरंभ हो अधिवेशन कार्यक्रम राज्यपाल अभिभाषण आज अधिवेशन आरंभ होगा जाऊँगी विरोधी और शासक दल आगे प्रसंग अनेक अच्छी से सबू प्रसंग विधानसभा बजेट अधिवेशन एथर बेस सरगरम होगा नहीं कि आशा रोचे गृह में शासक और विरोधी मुहांमुही हेबे आईन श्रृंखला चाषी प्रसंग उठाइबे विरोधी और केंद्रीय अवहेला को अस्त्र कर शासक दल तेणु हुलस्थुल हो पारे गृह सरकार को घेरिबा को सजबाज होइछंती विरोधी और विपर्यस्त आईन श्रृंखला और चाषी समस्या शासक और विरोधी रास्ता को ओह्लाई पूर्व आम देखीचे विपर्यस्त आईन श्रृंखला स्थिति और चाषी समस्या जमी चाउल प्रसंग को प्रमुख मुद्दा करथिले शासक दल ताकू नहीं उभय राजरास्ता को ओह्लाई बर्तमान से समान प्रसंग पुणी थे गृहर वातावरण को सरगरम करें बोली आशा करा सहित स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास का हत्या मामलें बर्तमान पर्यंत क्राइमब्रांच टीम तनाघना को नहीं विरोधी अस्त्र करिपारंती झारसुगुड़ा आउ एक पॉलिटिकल मर्डर प्लान अभियोग पूर्वतन ब्रजराजनगर विधायक अनुप साई को हत्या करने को कनेस्टेबल सरोज दास करथिले षड्यंत्र योजना सामना को आसिबा परे कोलाबिरा थानारू कनेस्टेबल को बदली कल्पना दास को संपर्कीय भाई सरोज दास आसिला मंत्री नव दास को गुलीमाड़ फोटो अति निकटरू गोपाल फायरिंग करुछंती हाथ देखा जाउछि हेले देखा जाउनी बंदूक हाथ पोजिशन जना पड़ुछि गोपाल ही बंदूक चलाउछंती आज विधानसभा बजेट अधिवेशन राज्यपाल अभिभाषण और आरंभ हो अधिवेशन सबु दल पाखरे मालमाल प्रसंग विरोधी श्रृंखला तो शासक दल चाउल सरकार को घेरिबा को बीजेपी और कांग्रेस प्रस्तुत भुवनेश्वर रही दिल्ली को टार्गेट करने को बीजेडी रणनीति पुणी भूमिकंप पुणी थरिला तुर्की रिक्टर स्केल तीव्रता 6.5 और 5.8 तुर्कीर हाथिया प्रदेश अधिक क्षतिग्रस्त 3 जनक मृत्यु 200 रु अधिक आहत भुशुड़ी पड़ा घर सीरिया रे भी प्रभाव गैंगस्टर को विदेश आसुछि टेरर फंडिंग झील खोजा को देशर 6 रु अधिक राज्य में 70 स्थान में एककालीन एनआईए टीम चढ़ाऊ पंजाब हरियाणा दिल्ली गुजरात मध्यप्रदेश सह आउ किछि राज्य में रेड जारी गिरफ गैंगस्टर को जेरारू एनआईए को मिलिथिला सूचना मुंबई रे ख्यातनामा सिंगर सोनू निगम को ऊपर आक्रमण अभियोग चेंबूर रे संगीत कार्यक्रम में सोनू निगम एवं तांको टीम सह दुर्व्यवहार करा जायथिबा अभियोग नहीं थाना रे एतला सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल आयोजकों जुक्ति सेल्फी नेबा को होइतिला ठेलापेला एवं 2023 मसीहा पई चलचित्र जगतर सर्वोच्च सम्मान प्रदान श्रेष्ठ चलचित्र भावे द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
गंगूबाई पई आलिया भट्ट श्रेष्ठ अभिनेत्री, ब्रह्मास्त्र पई रणबीर कपूर श्रेष्ठ अभिनेता। कांतारा फिल्म रे निखुण अभिनय पई मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड जीतिले ऋषभ शेट्टी। आज आरंभ हो विधानसभा बजेट अधिवेशन। राज्यपाल अभिभाषण आरंभ हो अधिवेशन हेले विरोधी और शासक दल आगे प्रसंग अनेक एथर कंपिब विधानसभा बजेट। Condolences on the sad demise of late Vijay Ranjan Singh Varia, sitting member and ex-minister, late Gaulak Bihari Nayak, ex-minister, late Ripunath Seth, ex-minister of state, late Vishnu Charan Sethi, sitting member, late Surendranath Kanha, late Rajendra Prasad Singh, late Kapil Narayan Tiwari, late Gopanarayan Das, late Adhikanda Sethi, all former members of the August House. I request all honorable members present today to join me in paying tribute to late Nava Kishore Das, sitting member and minister, late Gangadhar Das, late Arjun Chand Das, all former members. The House may convey our heartfelt condolences to the bereaved families of the departed souls. My government has always accorded highest priority to the aspirations of an empowered and vibrant Odisha, rightly positioned both at national and international level. With the wholehearted cooperation and support of our people to different pro-people initiatives, Odisha is now on a journey of transformation and growth. We successfully hosted 2 editions of the FIG Men's Hockey World Cup in a row, constructed world's largest fully seated hockey stadium in Samunda, Rourkela in a record 15 minutes time, and developed skilled in Odisha as a brand with national and international recognition. Opening of global companies like IBM's Client Innovation and Deloitte Technical Talent Hub in Odisha made us the technology resource hub of Odisha. The path-breaking Biju Swasthya Kalyan Yojana now provides universal health assurance to all the people of Odisha. 5T principles and more Sarkar initiatives have strengthened professional governance, improved governance measures through public feedback, and have brought people closer to the government through pro-people governance initiatives. My government has been able to set new benchmarks in many areas of government, be it disaster management, human empowerment, food security, school transformation, or quality health care. The ways of my government are now synonymous with pro-people, pro-poor governance. I commend my government for successfully organizing the 3rd edition of the Make in Odisha Conclave, showcasing Odisha's growth story, creating investment-friendly environment for investing in Odisha and the FIH Men's Hockey World Cup 2023, exhibiting Odisha's prowess in hosting world-class sporting events back-to-back. My government has approved Industrial Policy Resolution 2022 for the next 5 years to transform Odisha into industrial hub of Western India by promoting industries in the first and priority sector of the state. Odisha has best-in-class facilitation and incentives for investors and a distinct competitive advantage. Odisha has been accorded the achiever status in recently released Ease of Doing Business ratings by Government of Odisha. With abundant natural resources, skilled workforce, progressive policies, strong result-oriented governance, and conducive business ecosystem, Odisha has emerged as a leading investment destination of the country. The 3rd edition of Flagship Investor Summit Make in Odisha Conclave 2022 showcased huge investment potential in industrial prowess. It received investment intent of more than ₹10 lakh crore with employment of more than 10 lakhs. The grand event witnessed participation of 11 countries, hundreds of international delegates, 3 country partners, Japan, Germany and Norway, and many industry captains. With setting up of high-performance centers and world-class sports infrastructure, Odisha has emerged as one of the international sports destinations. During 2022, Bhubaneswar was the co-host venue for the FIFA Under-17 Women's World Cup India. It gave a major boost to the game of football in the state.
To promote football among children, over 43,000 footballs were distributed to schools across the state. I congratulate my government on successfully hosting the FIH Men's Hockey World Cup twice in a row. This edition of the Men's Hockey World Cup, which was held in both Bhubaneswar and Rourkela, also saw the construction of world's largest fully seated Birsa Munda Hockey Stadium with 20,000 seating capacity, along with other infrastructure facilities with a record of 15 minutes time. To further boost infrastructure in the hockey heartland and nurture talent from the grassroots level, 20 hockey training centers with synthetic turf are being constructed. My government's efforts have transformed the state sports infrastructure to nurture champions for tomorrow and promote sports in a big way. It is heartening to see players and visitors from around the globe coming to our state to celebrate their favorite sports and make their stay in Odisha memorable with our hospitality. My government has formulated Odisha's Tourism Policy 2022. The policy promotes sustainable and responsible tourism with a vision to introduce niche tourism products, resilient tourism infrastructure, take tourism to unexplored destinations and focuses on accelerated development of the tourism sector. The new policy offers unmatched and attractive fiscal and non-fiscal incentives to augment private sector investment. Odisha's community-managed eco-tourism initiative has emerged as a successful model for attracting tourists. With the engagement of local communities in managing the nature camps, the state has further strengthened livelihood of forest-dependent communities with the objective of holistic destination development along with creation of state-of-the-art tourism infrastructure and niche tourism products to attract tourists and investors to invest in premium accommodation and hospitality projects across the state. My government has taken up integrated master planning of 16 priority destinations. Additionally, 69 tourist destinations have also been identified in the interior parts of the state for development of scenic sports at less explored locations with focus on provision of basic amenities and facilities. My government has allocated more than 5% of GSDP during 22 and 23 for continued thrust on creating quality infrastructure. This higher capital outlay with its multiplier effect has been instrumental in rapid economic growth and employment and generation for the working population. Railway connectivity and infrastructure propel economic activities and growth. My government partnered with Indian Railways to fill the viability gap wherever required. We have initiated joint venture, special purpose vehicles with Railway Ministry and other ministries to construct new rail lines and corridors and have directly financed construction of railway lines besides providing land free of cost for construction of new railway lines. My government has notified the Odisha Motor Vehicles Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility Policy 2022 to reduce air pollution by scrapping old and unfit vehicles, to revive the unorganized vehicle recycling industry and to encourage setting up of registered vehicle scrapping facility in Odisha. My initiatives have already been introduced for modernization of service delivery to the public, like issue of digital driving license and registration certificate, introduction of paperless online vehicle registration system at dealers' point, and adoption of smart queue management in RTO offices. My government has formulated Odisha Port Policy 2022 for holistic development of maritime ecosystem and to facilitate integrated development of the non-major ports and inland waterways, encourage private investment and generate employment. At present, 2 non-major ports at Dhamra and Gopalpur are operational in the state. Cumulative revenue share of rupees 742 crore has been collected over last 5 years from the 2 ports. Land alienation work is under progress for another 2 non-major ports, Swanlekha Port and Astranga Port. The Odisha Civil Aviation Policy 2022 has been formulated to further improve air connectivity and to create a more suitable business environment. This 5-year policy will unlock untapped potentials in the aviation sector and create jobs. My government's decision to operate direct flight to Dubai, Singapore and Bangkok will attract foreign institutional investors and MNCs, simultaneously make international travel seamless and economical for the people of Odisha. Jayapur has become the first state-owned airport to get a license for flight operations. Direct flight services
between Biju Patnaik International Airport and Jayapur Airport in Koraput have also commenced. Flight operation in Rourkela, Bhubaneswar Rourkela route has also commenced, which facilitated flight of players, match officials and spectators during the Hockey World Cup 2023. Construction of Sri Jagannath International Airport at Puri is in progress. With the effort of my government, Biju Babu's Dakota aircraft was successfully shifted from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata to Biju Patnaik International Port, Bhubaneswar, and being installed there for public viewing. My government attaches utmost priority to the quality power infrastructure across the state and is committed to provide quality and reliable power supply to all. During the last 20 years, huge investment has been made to enhance the generation capacity and to strengthen transmission and distribution infrastructure. Odisha Renewable Energy Policy 2022 has been notified to encourage development of renewable projects about 11,000 megawatt capacity in the state by 2030. My government's flagship scheme, Odisha Distribution System Strengthening Project for construction of 473 grid substations of 33 by 11 kV has ensured the completion of 463 substations, and with the operationalization of these substations, the quality and reliability of power supply has improved in the rural areas. Rupees 1,796.73 crore has further been improved by the government for construction of additional 99 grid substations of 33 by 11 kV and associated lines, along with 64 independent lines under phase 4. Rupees 188.58 crore has been released by my government under Biju Gram Jyoti Yojana for electrification of left-out household by June 2023. With effective policy decisions and successful implementation of schemes, our state is now ranked number 1 with the lowest unemployment rate in the country with a score of 0.9% as per the report of the Center for Monitoring Indian Economy. Odisha has set up more than 5 lakh MSMEs with more than rupees 24,341 crore investment. Newly formulated MSME Development Policy 2022 is intended to give further impetus to industrial growth with special incentives for MSMEs to create jobs and boost economic growth in industrially backward districts. The Odisha Logistic Policy 2022 aims to create integrated logistics systems to enhance competitiveness, operational efficiency and sustainability. The policy aims to map, develop and augment logistics facilities across the state, improve efficiency of supply chain, decarbonize logistics sector and encourage private sector investment. It will strengthen state's position as preferred destination for trade and commerce. Similarly, the Odisha Apparel and Technical Textiles Policy 2022 has been brought out to boost employment and enhance economic growth. My government has recently formulated Export Promotion Policy 2022 to achieve an export target of rupees 3.5 lakh crore by 2026-27, thereby taking Odisha to the league of top 5 exporting states. It advocates diversification of export basket by facilitating value addition. The Food Processing Policy 2022 is meant to tap immense potential of the sunrise sector. It gives special incentive for ST and STPWD women and technical entrepreneurs as well as incentives for the letting of enterprises in industrially backward districts. Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Scheme plays a critical role in providing wage employment to the wage seekers to secure their livelihoods. The state aims to generate 25 crore person days during the current year, providing employment to 30 lakhs households and 46 lakh wage seekers. To convert challenges into opportunities, my government has introduced an urban wage employment initiative, Mukta, for creation of inclusive and climate resilient urban infrastructure. My government has already spent rupees 500 crore on wage employment and creation of community assets. Further, my government has rolled out 6,320 urban infrastructure projects under Mukta with an investment of rupees 700 crore and is taking steps for their timely completion.
Mukta has received global recognition with Gangaju Award for Urban Innovations 2021 and has also received the prestigious World Resources Institute ROSS Prizes for Cities Award 2021-22. The craftsmanship of our artisans and weavers is one of the best in the country. 1,396 weavers above 60 years have been covered under Varisht Bunkar Sahitya Yojana for availing monthly social security assistance. 292 weavers have been covered under work shed cum housing. 6,515 weavers provided with concrete 100-meter pits and 190 weavers covered under skill upgradation training with financial assistance. Under Mukhyamantri Bayan Jyoti Yojana, 5,421 weavers have been provided with financial assistance of rupees 10 crore. My government is well aware of the rich tradition of handlooms and handicrafts in the state and is initiating definitive programs for holistic development of the sector. Applications have already been filed before GI registry for graphical indication, registration of silver filigree of Kathak, Odisha brass and Bella metal craft of Kantilio and Odisha golden grass craft of Kendrapada. Steps have also been taken for GI registration of Belagunta flexible brass fish and Barapalli terracotta roof titles. Agriculture and its allied sectors are the largest employment providing sector of our state and hold the key to the state's growth and socio-economic development of its people. Therefore, my government lays specific emphasis on development of this sector through various interventions supported by a comprehensive and inclusive state agriculture policy. Separate agriculture budget, dedicated agriculture cabinet, inclusion of services under 5T, and Mo Sarkar are some of the remarkable initiatives which have ensured allocative priority for this sector. Faster decision making for sectoral growth and welfare of farmers in the state. Odisha is now a food grain surplus state. The food grain production in the state has touched 130.39 lakh metric ton during 2020-21, which has more than doubled during the last 20 years. Similarly, rice production in Odisha has touched an all-time high of 2,730 kilogram per hectare with a 2.5 times increase during the same 20-year period. Odisha is the first state in India to observe 10th November as Mandya Divas, Millet Day, with the objective to promote the humble millet to the global level. Odisha was the first state to inaugurate curtain raiser for International Year of Millets 2023 at Make in Odisha Conclave 2022. I recall with pride that my government launched Odisha Millet Mission way back in 2017. My government's millet mission, meant to strengthen the production and promotion of millets in the state, has earned praise from Niti Aayog. UN World Food Programme signed Memorandum of Agreement with Odisha Millets Mission to study and replicate the model in Africa and other countries. All these efforts won Odisha the recognition of Best Millet Promoting State under Poshak Anaj Award by ICR, IIMR and FAO for the last 2 consecutive years. Till date, 41.08 lakh small and marginal farmers and 18.69 lakh 10 less agriculture households already been provided assistance under Kalia scheme. Kalia scholarship introduced during 2021-22 to provide scholarship for higher study to eligible children of the beneficiary farmers of Kalia program has so far covered 765 student scheme. Odisha is the first state in the country to launch common credit portal simplified application for agriculture loan to facilitate seamless access to more than 300 term loan products to farmers and agri-entrepreneurs offered by 40 plus nationalized and private sector trained in a single window. Coverage of sharecroppers, especially landless farmers, who constitute a sizable proportion of the family farming community and remain outside the institutional credit system, is now ensured under Bhumihin Agriculturist Loan and Resources Augmentation Model Ballarama Yojana in collaboration with NABARD. Odisha is a pioneer in launching Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana during 2018 to promote agri-enterprises through ease of doing agri-business. Epicol is the state model agency to implement this. Till December 2022, online registration of 5,368 commercial agriculture enterprises proposals have been received, which are in various stages of implementation. And so far,
858 agri enterprises have been supported with an incentive of rupees 127 crore under the scheme. For Kharif 2022 season, against crop loan dispensation target of rupees 9,000 crore, cooperative banks and cooperative societies have financed rupees 8,711 crore to 18 lakhs farmers, thereby achieving 97% of the target. For Rabi 2022-23 season, crop loan dispensation target of rupees 7,500 crore has been fixed by cooperative banks as against last year's Rabi target of rupees 6,500 crore. Livestock and fisheries sectors have augmented the income of our farmers over the last 2 decades. My government has identified these allied sectors as future growth propellers for our farmers, women self-help groups and entrepreneurs. To achieve self-sufficiency in fish production, the state has introduced commercial cage aquaculture in reservoirs by encouraging private entrepreneurs in 1% water area of large and medium reservoirs. This approach aims to increase fish production by an additional 1.25 lakh metric ton per annum. In this process, 104 sub-zones have been released out to 76 entrepreneurs for cage culture in Hirakud Reservoir. Biofloc-based farming system has been introduced by my government for intensive shrimp and fish farming for farmers and entrepreneurs with small land holdings. Under subsidy-oriented programs like Matsya Pokhri Yojana, my government encourages farmers to take up new fish tanks which enable lateral expansion of intensive freshwater aquaculture. Further, the liberal policy for long-term leasing of the panchayat tanks to women self-help groups for pisciculture has immensely helped to scale up scientific fish farming in the districts. My government has enhanced livelihood support to 15,000 fishermen families affected by imposition of fishing ban in Odisha for conservation and breeding of alive ridley turtles from November to May every year at Devi River mouth, Rishikulya and Dhamra River mouth. There is also year-round fishing ban at Bhitarkarnika Marine Wildlife Sanctuary. This assistance has been enhanced from rupees 7,500 to 15,000 per family from 2020-23. To achieve self-sufficiency in egg production, new entrepreneurs are being encouraged to take up commercial layer units with a minimum 10,000 bird capacity under Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana, where 40 to 50% subsidies provided with a maximum limit up to rupees 50 lakhs. My government is also continuously promoting broiler farming in the state. This year it has been targeted to support 6,500 individual entrepreneurs and 3,000 women self-help groups for establishment of small-scale broiler units. For enhancing milk production in the state, my government has started using advanced bovine breeding technology with the objective of production of more female cows with high genetic merit through artificial insemination and reduction of male progeny. The state is supporting women self-help groups for commercial goatry units and individual farmers in the mining affected districts with small goatry units. The state is keen to provide assured irrigation with emphasis on integrated water resources development, water conservation, and efficient water management practices. To conserve surface water and increase groundwater level, my government is constructing 3 in-stream storage structures while 16 more on the pipeline. Besides, 1,280 new check dams have been approved under Mukhyamantri Adivandha Yojana for conservation of surface water resources. Apart from surface water, my government is giving thrust for groundwater recharge in water-stressed areas through different innovative schemes. Providing irrigation to farmers is the top most priority of my government. During 2022-23, we have completed Dev Medium Irrigation Project and Mahanadi Chitrapallai Island Irrigation Project, which would benefit 164 villages in Murbhanj, Keonjhar, Kendrapada, Cuttack and Jagat Singhpur districts. Besides, more than 17,000 hectares have been provided with irrigation facilities from Swan Lake Irrigation Project. The work of Lower Sukti, Gangadhar Mega Lift Irrigation Project, Kanpur Irrigation Project
and Anandapur barrage project have also been expedited and targeted for early completion. Apart from major and medium irrigation projects, Parvati Giri Mega Lift Irrigation Scheme, deep bore wells, community lift irrigation projects have been taken up in large scale to bring more areas under irrigation. We have completed 192 mega lift projects, more than 1 lakh bore wells in the meantime, and it has been decided to take up another 1 lakh deep bore wells during the next 5 years. My government has taken up cyclone resilient saline embankment project for raising and strengthening of 199 kilometer of saline embankment at an estimated cost of rupees 763 crore in coastal districts of Balasore, Bhadrak, Kendrapada and Puri. National Institution of Ocean Technology is providing technical assistance for this project. These saline embankments can sustain impact of very severe cyclonic storm of wind speed up to 250 km per hour. It will immensely benefit the people in these coastal districts. Every life is precious, continues to be the guiding principle and priority of Odisha's health sector transformation. Odisha's phenomenal progress in health sector is primarily attributable to implementation of more than 15 mega schemes and several result-oriented health system strengthening measures, including the epoch-making Biju Swasth Kalyan Yojana. Biju Swasth Kalyan Yojana has redefined universal health care along with empowerment more than 500 private hospitals across the country to provide cashless treatment to BSKY smart health and card holders of the state. Presently, 75,000 poor patients are receiving treatment for critical ailments every month in these empaneled private hospitals, for which the government is spending rupees 200 crore every month. Nearly 6 lakh beneficiaries have already availed benefits to the tune of rupees 1,200 crore through Biju Swasth Kalyan Yojana Smart Health Cards. In a remarkable feat, Odisha has received first prize for generating highest number of Abha-ites during Universal Health Coverage Day 2022 campaign. Top 10 ranking districts in ID creation are from Odisha. Odisha has undertaken several path-breaking initiatives in healthcare services by leveraging technology for the well-being of its people. My government has launched Anemia Mukta Lakshya Abhiyan to benefit nearly 1.37 crore people, including pregnant and lactating mothers, women of reproductive age group, adolescents and children. My government has strengthened its measure to wipe out malaria by extending Durgam Anchalare Malaria Nirakaran initiative in 21 districts for another 5 years to achieve zero malaria by 2030. My government has established the Postgraduate Institute of Medical Science and Research at Capital Hospital, Bhubaneswar. Studies in PG courses at the institute have started in 6 disciplines from the current academic year. Commencement of MBBS courses in medical colleges at Puri, Keonjhar and Sundargarh will ensure availability of more doctors for healthcare services in Odisha. PET CT scan facility is now available to patients free of cost at Acharya Harihar Postgraduate Institute of Cancer, Cuttack, which is first of its kind in any state government-run hospital. This will be immensely helpful to poor patients seeking cancer care and treatment. My government has approved cancer care units in 10 districts to strengthen cancer treatment facilities, which will go a long way in making Odisha a progressive cancer care state in eastern region. With proactive measures like creation of new posts for doctors and paramedics and restructuring of medical and health services cadre, health services across the state are being immensely improved. It is noteworthy that 203 assistant professors joined Odisha Medical Education Service during 2022. Such recruitment of health professionals would improve health education and healthcare services in Odisha. I am happy to commend my government for its outstanding performance in the management of public distribution system. Odisha has been ranked as the #1 state across the country in the recently conducted state ranking index for NFSA by Government of Odisha. My government has covered 93.303 lakh families comprising of 3.24 crore beneficiaries under National Food Security Act and 2.92 lakh families
with 9.05 lakh beneficiaries under state food security scheme. Annual allocation of 22.56 lakh metric ton of food grains is being seamlessly distributed through 12,129 fair price shop at rupees 1 per kg. All the 155 food storage depots managed by the Odisha State Civil Supplies Corporation Limited have been automated. All the fair price shops are automated through electronics point of sale devices which carry out Aadhaar authenticated distribution of food grains. Home delivery of ration is made to around 8,000 old and infirm beneficiaries through Gram Panchayat fair price shops. Odisha has already implemented One Nation, One Ration Card program across the state since July 2021. PDS beneficiaries under NFSA are now availing intrastate and interstate portability of ration card, and beneficiaries under SFSS are availing intrastate portability of ration card to conveniently receive their monthly entitlements. Odisha has made rapid strides in expanding paddy procurement facilities. Last year during Kharif marketing season 2021-22, the state procured 71.03 lakh metric tons of paddy from 15.14 lakh farmers, by which Odisha was ranked among top paddy procuring states in the country. In addition to meeting its own requirements of the rice, the state now makes substantial contribution to the central PDS pool. During the ongoing Kharif paddy procurement operation, satellite imagery is being utilized for validation of paddy crop growing areas in all 30 districts of the state to bring transparency in procurement process. My government unique initiative Vasudha ensures universal access to potable piped water supply to households in rural and urban areas. This scheme provides adequate safe water for drinking and domestic purposes on a sustainable basis and further strives to improve the drinking water supply in the state. My government has a mandate to provide adequate and safe drinking water to all the rural households by the end of 2024. Working in this direction, 3,350 piped water supply schemes and 31,761 tube wells have already been installed during the last 5 years. There has been a quantum leap in the rural water supply with the implementation of 207 mega piped water supply projects worth rupees 36,455 crore, out of which 10 projects have already been completed. 158 projects are under execution and 39 projects are under process. Odisha is a trend setter in the country in achieving universal coverage of tap water connections in urban areas. 82 urban local bodies have already been achieved 100% household tap water connections. Bhubaneswar and Cuttack have become the first and second municipal corporation in the entire country to have achieved 100% household tap water connection. My government is committed to provide 100% house connections in all the 115 cities of the state before December 2023. Under Drink from Tap mission, Puri town has been covered with 24/7 water supply of directly drinkable water from tap, conforming to IS 10,500 standard with 100% household connections and metering. With this, Puri is the only city in India to achieve this distinction. After Puri, Gopalpur has become the second city to achieve 24/7 drink from tap status. My government transformative initiative, the Jaga mission, has been transforming slums into livable habitats. Jaga mission, the world's largest slum land rights and upgradation program, is now implementing Biju Adarsh Kalyan program, which is aimed at transforming slums to Adarsh colonies. 2,909 slums across 115 ULBs of the state will be transformed to Biju Adarsh colonies to improve the quality of living in slum areas. 725 slums have already been transformed to Biju Adarsh colonies, and 1.73 lakh families already granted land rights certificates. While bringing unprecedented changes in the lives of millions through land rights, Jaga mission provides social and economic justice to the poor. It has received many national and international recognitions. Odisha received
PMAYU Awards 2021 for Best Policy Initiatives by State under Special Category during Indian Urban Housing Conclave in Rajkot. The efforts of my government as a pioneer state in creating solutions for the landless urban poor by providing them with security of tenure under Jaga Mission has been recognized worldwide. My government's conviction that the slum dwellers are an indispensable part of the city fabric and they need to be empowered with the security of tenure instead of being evicted has been recognized by the United Nations Habitat, and Odisha has been conferred with the World Habitat Bronze Award 2023 for its slum upgradation program, Jaga Mission. My government is committed to provide Pakka houses to all the rural poor. My government is implementing rural housing scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, with 40% matching state share. Additionally, state-funded schemes like Biju Pakka Ghar Yojana Mining, Nirman Shramik Pakka Ghar Yojana are being implemented for achieving the objective, shelter security for all. My government has completed 31.42 lakh Pakka houses since 2014 to 15 and has become a pioneer state in the country in rural housing. The innovative practice of tagging field functionaries with specific beneficiaries to facilitate timely completion of houses has been highly applauded by the Parliamentary Standing Committee. The system of incentive out of Biju Pakka Ghar Yojana to the beneficiaries of all rural housing schemes for early completion of their houses has set an example for other states to emulate. My government has already paid incentive of rupees 1,341 crore to 8.19 lakh beneficiaries for timely completion of their houses. My government has earmarked substantial resources as per the recommendation of 15th Finance Commission and 5 State Finance Commission for provision of basic services like sanitation, supply of drinking water, rainwater harvesting and creation of durable assets. The second phase of Swachh Bharat Mission Gramin program launched in April 2020 aims at open defecation-free sustainability and solid and liquid waste management in rural India, targeting ODF plus status for all villages. Accordingly, village action plans are being prepared with focus on sanitation and solid and liquid waste management in convergence with Swachh Bharat Mission Gramin program, Manrega and Finance Commission grants. We target to saturate all Gram Panchayats with sanitation and waste management activities and towards ODF plus declaration of all villages by 2023 to 2024. Under Urban Sepatage Program, construction of 118 sepatage treatment facilities in 114 ULBs have been taken up, out of which 109 facilities have already been completed and made functional. Once all these sepatage plants are completed, Odisha will become the first state to achieve 100% saturation under sepatage treatment. Odisha's sepatage model has received international recognition with Medal of Honor in the Ganjo Award. There has been a paradigm shift in the decentralized solid waste management.